कौन सा वाला कभी ऐसे जब दोनों से ये भी है होता ना वो जैसे ना ये भी वही होता है। यहाँ पर मैंने नीचे Good morning. और सर देखता हूँ एरिया क्या है। एरिया के बाद ही कल एक्सपेक्टेड हाई से जो गिरी पूरे पॉइंट लिए, पूरे एक्सपेक्टेड लो से 3 पॉइंट से मिस हो गया, लेकिन हाई से मैंने पकड़ लिया। एंड बेस इज अप, प्रेशर इज अप। ओके, so high to go low would be a good strategy, I think. Stay in sell from high and then buy from 100 point की skip थी, so भाई low strike price जो आई है सोने जो दी है, that's the value है। हाँ कि उसके बाद चेंज हो सकती है। 19,500 become. So what is important today at 10 o'clock we have high impact news, very high impact. So open connection. MPs के अंदर आपका 30-20 में there is a SAAS setup, right? You plan. तो इसमें 560 to 8.75 बोला ना? 8.5. 8.5. Yeah. So 560 to 8.5. इसमें यूजर ने पासवर्ड डालना रहेगा ना, तो ninja.com की वेबसाइट पे जाके ना निंजा लेजेंड्स का यूजर, लेजेंड्स की वेबसाइट पे सबसे नीचे लिखा होगा। लेजेंड की वेबसाइट पे कहाँ पे जाना है? ये ऊपर डैशबोर्ड पे नहीं, डैश वो जो आपका ऑरेंज बना हुआ है, डैशबोर्ड पे। Pencil H ठीक है, नो अभी अभी जाए, अभी खुद करेंगे ताकि आपको तरीका बता देता हूँ। सुपर एरियाज पे क्लिक करें, लेजेंड पे क्लिक करें, प्लान्स पे जाएं, कोड डालें ताकि
एरिया ड्रॉप करना और 1510 पे it has to be 4.75. Yes, correct. That's where the candle formed. मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई ऐसा ही सेटअप था 1510 के अंदर मैंने उठाया उसको 4.75 की जगह 4.5 से उठ गई मेरी उठी स्टॉप लॉस लिया वापस चली गई Yeah. थैंक यू राहुल No problem. No problem. तो आप ऊपर जाने के लिए ज्यादा है Pressure ऊपर का है तो let's see. ये वो अगर हो गया था तो मेरा तो आई वाज डन फॉर द डे Yeah, yeah. लेकिन 4.5 भी ठीक है लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा करीब हो जाता है ना एक टिक से इन स्टॉप लॉस हैज टू बी 20 टिक्स or 40 ticks no 19 ticks or 20 ticks and then 34 ticks 35 ticks so that's your stop loss on SRES so stop loss is 34 ticks 34 ticks on 3020 and 19 ticks on 1510 because that's where the next candle is really formed. I think मेरा इसके अंदर बहुत छोटा था वो Stop loss 12 ticks का था 12 तो बहुत short है जी. हाँ जी क्लिक करें plans पे. कौन सा वाला Did they fix the legends trading? आप देखें ना कौन से साइज का प्लान लेना है. 33 वाला सर बोले हाँ क्लिक करें फिर 25,000 वाले पे. चलो भाई जिससे आजकल प्रेशर भी आता है रेस भी आता है तो बाय और एज स्ट्रेटजी नहीं कल भी प्रेशर डाउन था प्रेशर अप था वो प्राइस एक्सपेक्टेड लो लगा के आई राइट सो देयर इज नो ट्रू एज इन right now the price is the value area is sitting below expected low today. Interesting. Super area 70 लगाइएगा कोड. एक बार बताइए एक सेकंड. बॉटम ऑफ द बार ले लें मिड बैंड ही है 3020 का. So 5620 3020 mid band is also good. 5630 जैसे है हाँ जी. हेलो ਹੁੰਦਾ ना कोई ब्लूटूथ डिवाइस ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वो क्या कहते हैं एक इधर एक राइट गाल पे एक लेफ्ट गाल पे. नहीं ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਨ ਅਪਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਾਏ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ ਦੈਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਕੌਣ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ नो प्रॉब्लम. एक सेकंड सर मैं इधर ऑफिस वाला ऑन कर रहे हैं.
ठीक दियो जी एनी डेस्क है मेरे को, सिर्फ एनी डेस्क ऑन कर लो। ठीक है 50,000 ਇਹਦੇ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं नहीं एक सेकंड में एक करके चेक करता है। आसान तरीका है, 9 पोजीशन खुलियां हुई हैं। टेक प्रॉफिट ठीक है तो हाँ ठीक है। ए देखो याद रखना थोड़े सारे 2600 हो गए ने, सिर्फ 400 रह गए। ठीक है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ए टेक प्रॉफिट डन हो गया, पढ़ दिया। मैं एक करके देखना ए दे सिर्फ $30 रह गए ने बढ़ाने वाले, पढ़ दिया। हाँ इधर जान है, फिर कल ही कर लो। नहीं मैनू इधरों ज्यादा वो देखना होंदा तुहाडा। अच्छा हुण मैं तुहानू क्विकली शॉर्टकट दस दूं। ਇਹ देखो ट्रेडर वेट है ना, तुसी अगर किसी खोल के बैठे हो ऐसे लेजेंड बैठे हो, अगर कभी ना बंद होवे ट्रेड निंजा तो ठीक है ਜਦੋਂ फटाफट लॉग इन करके ऐसे इस ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ट्रेड लगा होएगा लेजेंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ देखो कितना ਤੁਹਾਡਾ सब कुछ ठीक है 100% है, टेक प्रॉफिट है। ठीक है इथों राइट क्लिक करो, ਇਹ ਲਿਖਿਆ एग्जिट ऑल पोजीशंस। ठीक है क्योंकि इथों भी तो फ्लैट कर सकते हो ना। अगर कभी हो गया कि हम इथों लॉग आउट करेंगे, हम दूसरी चला रहे हैं ना। एक सेकंड लेजेंड चेक करा ਉੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡ ਚਾਰਟ $6 ਬਣ ਗਏ ਨਾ $8 ਤੁਹਾਡੇ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜੈਂਡ ਫਟਾਫਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ, ਓਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ $32 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 36 ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 37 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। बस राइट क्लिक एग्जिट ऑल पोजीशंस। नहीं फिर उस फिर लीडर नु ना बंद करना। हाँ जी डन हो गया जी। देखो लॉग आउट टेक प्रॉफिट वाला जाओ, टेक प्रॉफिट या 4 विंडोवा खोल लो ना एक एक करके। इतने ज्यादा खोले ना, माय गॉड यार
ठीक है सर मैं नहीं हजे तक राउंड 2 च पहुंचो ना कुछ चेक आए तो देर दे नो प्रॉब्लम ठीक है ओके सर मिलते हैं ओके थैंक यू थैंक यू ओके ओके इंशाल्लाह 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 ओके थैंक यू हाँ जी आपने कोड डाल लिया था ना अभी अभी आपने स्टार्ट प्लान्स पे क्लिक करें प्लान्स 25,000 वाले पे क्लिक करें और अब कोड डाल दें ये ऊपर लिखा है क्लिक हियर फॉर कूपन कोड ये सामने हाँ जी कूपन कोड पे डालें और सुपर एरिया 70 एंड देन यू बी हाँ जी सुपर एरिया 70 हाँ जी गुड मॉर्निंग जी और इसको अप्लाई करें और नीचे जाके पे कर दें बस दैट्स इट हाँ जी एक ही वर्ड है अभी वो बता देगा ना कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली नहीं हाँ सुपर एरियाज ऐसा और 70 उसका वो तो नहीं है कि कैपिटल में लिखना था नहीं नहीं हाँ जी हाँ All right, good morning, everybody. Tuesday, April 1st, 9:03 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Let's get started. Quickly look at the news. Forex Factory, it says 10 o'clock, we have very high important news, and 9:45, we have medium. So trends, sign up, that's it. And we will have news at 9:45 and 10. JOLTS opening, quite a bit of a volatility is expected. Let's look at that. Areas are updated for both ES and Nasdaq. Your base and pressure is up. Where is the night high? Night high for Nasdaq is 19,511. So 19,511. Nasdaq low has been 19,280. Let's put it 19,280. So the swing has been for 230 or so points. Where's the price right now? 19,400, right at the pivot. So right in the between R1 and S1. So we are right at R1 in S1. ES, we have the high of 63, low of 18. And where are we right now? 38. So 38, right in the middle between R1 and S1. Okay, so we have the pivots, we have the value area, we have everything. So let's see where we have to go. So price is heading, both candles are green. 4-hour candle is green, half an hour, and last 2 1-hour candles are green. So we are almost heading to, honey, done now. Okay. So let's see if it goes to the value area. Right now it's at a 60-minute mid-band. Your so R1 for ES, let's wait for that before you want to sell. हाँ इनके चार्ट्स ठीक करने
चार्ट को कर दिया तुमने हाँ। देख लो लेजेंड चल रहा है कि नहीं लेजेंड ठीक अच्छा अच्छा सर, वो तो उनके हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। So this is a price is coming from higher high, both are green. Let's see this midband if it respects it. So for Nasdaq, quickly going in, please do Nasdaq around S2. If you're thinking of Nasdaq, S2. So from opening S2, and if you want to go Nasdaq from after opening, maybe R2. S2 and R2 would be my first. I'm personally skipping R1 and S1. So anybody doing Nasdaq, S2 and R2 would be a good good entry right now. ESR R1 ठीक है, और S2. R1 and S2 would be reasonable. When say R1 and S2 is reasonable, so basically buy from S2 and sell from R1. Correct, correct. So why am I picking S2? There's a multi-reason for it. There's a line going through. So 1 second on a 60-minute chart, because that's very close to my Fibonacci blue. So it's a bottom of the Fib blue on a 60-minute. So I'm starting to go ahead and so for that, let's do. जी sir. ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पहले पढ़ लिया था, उस तो बाद ये नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। So the job openings is very critical. Let's take a look at what will happen approximately then. $60-minute does have a candle to the down, arrow to the downside on MES. So R1, I am expecting as close to it to probably sell from there. Because it got to R1 around 7 o'clock in the morning, 6 to 7 already. So from here to R1 is about 20 points difference. So for NBT group, I will be placing my first order on R1 approximately. So, good morning. So England, you bought a lot. सर ठीक है, मुझे एनी डेस्क दें। आप इंटरनेट पे नहीं कनेक्टेड, आप किसी इंटरनेट से नहीं, इसका ये मतलब है कि आप इंटरनेट पे नहीं कनेक्टेड। नहीं, देखिए MES 60 मिनट पे एक 4 घंटे पहले देखें, एक एरो है 4 R1 के करीब, एक एरो टू द डाउन आया हुआ है। ये नजर आ रहा है, ये वाला एरो 60 मिनट MES जून में, ठीक है, डोंट वरी, ये रैंडमली अपीयर होता है, कि पॉसिबिलिटी है कि ये पहले S1 लगा के आए, जो लगा चुकी है, पॉसिबिलिटी। सो 5687 so S2 for Nasdaq, yeah, and R2. S2, R2, Nasdaq.
superareas.net. Let's log in there. जी सबको एक बार In Morgan. वैल्यू एरियाज 9:30 बजे के बाद वैलिड होते हैं। वैल्यू एरिया 3 PM के बाद हो जाते हैं। कल का जो वैल्यू एरिया एग्जैक्टली 3 PM गॉट प्लॉटेड के पूरे कल 24 घंटे में, मीनिंग के पिछले 3 बजे से अगले 3 तक 23 घंटे में क्या, 24 घंटे में वॉल्यूम क्या रहा। तो कल जो 3 बजे उसने प्लॉट किया है वो ये थे नंबर्स, ठीक है। वैलिडिटी 3:01 से शुरू हो जाती है। अब हमने सिर्फ देखना, अगर आप ES देखें, ये वैल्यू एरिया कल का क्या है, 13 से मेरा है 62 तक approximately. What's written here is 63 से 21 ES का है, मेरा जरा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम MES। तो 62 से, तो अब कंप्यूटर ये कह रहा है कि अगर तो बेस बनी तो बॉटम पे 55-62 तक आ सकता है, राइट। सो तो ये वैल्यू एरियाज उसने एक और तो आपने जैसे 9:30 बजे के बाद, तो अगर जैसे S1 R1 होते हैं 9:30 बजे के बाद वैलिडिटी नहीं रहती है, अगर होते जैसे S1 वैलिडिटी खत्म है। नहीं अभी दोबारा टेस्ट हो सकता है ये हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि S1 S2 R1 है वो 9:30 से वैल्यू एरिया 9:30 से भी थोड़ा सा पहले, क्योंकि नाइट सेशन अराउंड हमें न्यूज देखनी होती है। Where do we figure out S1, R1, S3, R3? Because sometimes you have a news at 8:30. We want to know at 8:30 how much was the spike. वहां से डिटर्मिनेशन सॉफ्टवेयर लेके आता है कि जो न्यूज का इम्पैक्ट आया उसकी स्पाइक क्या थी, फिर एरियाज कैलकुलेट होते हैं। तो आपको एरियाज 9 बजे तकरीबन मिलते हैं, 9 सवा 9 तक, कि अगर उसने स्पाइक को टच करना है। सो अभी देखें जो स्पाइक आई पूरी रात में, अब हमारे R1 का और S1 का लेवल डिफाइन हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनली आई विल टेक S2 or R1. So it's heading towards R1 because base is up, pressure is up, so it should at least go to R1 first. Let's see if it does. Okay. हाँ जी, any does think quickly. 1000 589 868. Okay, जी accept करें quickly. Notepad NBTA Pro. हम लोग इसे
इसमें डैमेज करने की कोशिश कर रही है, इसमें जो लो द बार जो है 38.75 का फायदा है नहीं है। एक सेकंड, मैं अभी चार्ट्स के सामने नहीं हूँ, गिव मी जस्ट नहीं अभी आपने कुछ नहीं करना, मैं जस्ट हायरिंग समबडीज एनपीटी। आपने सिर्फ ठीक है, कनेक्शन पे जाके ये माई निंजा ट्रेडर है ना, इसको सिर्फ ऑन करना है। तो 101 हाँ नीचे आ गया ये। हाँ जी हाँ जी, लेकिन हाँ नीचे वाला। लेकिन आपने ये कब लिया लेजेंड्स? कल लिए। आपने ब्रांड नहीं लिए? हाँ जी। सिग्नेचर्स कर दिए थे ट्रेडोवेट वाले? नहीं। देखिए उसके बगैर नहीं होगा ना। उसका तो नो प्रॉब्लम। ये आपको किसी ने करवाया है, खुद किया आपने? खुद किया। लेकिन उसकी वीडियो में मैंने कहा था कि जब आपने पहली दफा साइन अप करना है ना, तो आपको ये इसमें लॉगिन करके साइन करने। एक सेकंड, ये मैकफी आपका बार बार आ रहा है, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। क्योंकि जो भी फंडेड कंपनियां हैं ट्रेडोवेट वाली, उसके एग्रीमेंट साइन करने होते हैं डेटा के, तो वो अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ। डन हो गया। ये देखिए, नॉन प्रोफेशनल, ये अपना नाम टाइप करें। हाँ जी सर। करती है। एग्रीमेंट्स अब साइन हुए हैं, अब आपका डेटा चल जाएगा। ये वेबसाइट आपका इमरजेंसी बैकअप है। अगर निंजा बंद हो गया और आपका ट्रेडोवेट ना खुला हुआ, तो मुझे ना कहिएगा कि मेरा अकाउंट कैसे खुलना है। पहले ट्रेडोवेट खोलें, क्योंकि ये मैं आपको सेट कर रहा हूँ। तो ये मैं इसको बुकमार्क भी कर दिया, ठीक है, न्यूज़ फोल्डर में। इसमें लॉगिन करना है आपने। इस वक्त ये बता रहा है कि आपके पास 25,000 की अमाउंट है और आपके पास ड्रा डाउन है 1500। इसको लेके जाना है 26,500 पे, और ये 0 ना हो, बस ये दो चीजें हैं।
लिक्विडेट को क्या करना है? बस सिर्फ लॉग इन करना है अपने यूजर नेम पासवर्ड से। ये आपका यूजर नेम पासवर्ड है, वो सेव कर दिया मैंने। ओके, तो जब आप लॉग इन करेंगे तो पहले ये खोल के साइड पे रख लें, फिर निंजा खोलें, ताकि आपका सारा सेटअप हो गया। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, बेस्ट ऑफ लक जी। सर एक सवाल बिफोर यू स्टार्ट। अच्छा, इसमें जब मैं चार्टर अपना चार्ट ट्रेडर में वहाँ पर सिम लगाना है और क्वांटिटी वाला कुछ नहीं कुछ करना है। अगर आपने रेश अपने उसको क्वांटिटी मेरी को बढ़ाना है, रेशियो में हाँ बस टच है, उसका तो कुछ नहीं करना। मेरा सिग्नल आपको सिम पे आएगा। ठीक है, okay, let me add a couple of more guys who just enrolled into NBT. Give me 1 minute. आप ऑन है, ओके, ठीक। क्योंकि वो एक दफा ऑन हो जाए तो अभी मैं सैंपल टेस्ट सिग्नल भेजूंगा। REP file save done. अपने बॉटम वाले बार भी है ऐसा आप लोग ये गुड मॉर्निंग जी। ये देखिए बॉटम ऑफ द बार 30-20 पे वो चल गया। नेक्स्ट पे बढ़ सकते हैं ना अगर मैं Add you guys to separate group. Market data required to trade this. हाँ, नहीं अभी आप 10 मिनट दें, अभी हमने एग्रीमेंट साइन किया ना, so wait for 10 minutes at least. छोटा साइज है। All right, so double divergence on ES 1510. So let's see. Good morning. How are you? Good. Okay. हाँ जी, नहीं हम जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स की, इसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। आप सिर्फ आप कुछ ओन नहीं करते, आप सिर्फ एक तरफ बेट लगाते हैं ऊपर या नीचे की, ठीक है। लेकिन विद के फ्यूचर्स की प्राइस क्या होगी, ऊपर होगी या नीचे, ऊपर जाए नीचे जाए हमें परवाह नहीं, नीचे बल्कि जाए फास्ट टाइम, हमें चाहिए मार्केट क्रैश, क्योंकि तेज हो जाता है। तो अभी जो भी S&P की प्राइस चल रही है, अगर वो $1 नीचे जाती है और आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आपको $50 मिलेंगे $1 की वजह से। तो अभी मार्केट ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट आ चुकी है 18 फरवरी से नीचे, 2000 पॉइंट, 600 पॉइंट नैस्डैक की ES की आ चुकी है।
इसको ये कल really truly पता लगेगा कि what will happen. I haven't put any NBT trade yet. I'm waiting for the news to go and kind of see which way will happen. At 9:45, we have news. At 10 o'clock, we have news. So we'll get started. So I'm here till at least 1 o'clock. So we will evaluate situation. But for Nasdaq, please R2 and S2 at least. Yes, R2, S2. One more divergence. I think the price is tired here. Good morning, Ji. So we will sit and assess the market. Even though base is up, pressure is up, but things could drastically change in about 2 minutes. Let's see which way it wants to go and test. All right, finally mid-band touched. 30-20 after that divergence. All right, market is officially open. The stock market. Let's see. Wants to go. Both Nasdaq and ES are red candles. Okay. $300 in my ear account. Should I put it? I would 100% because that's that's a big number. If you want, then only take areas because you're done your Because I initial. want to take a risk. I want to go see the city. That's fine. So now if the pricey right now, I'm going to wait until 10:05 to see what market will do. 9:45 and Jolt's opening is really critical at 10 o'clock. So I'm just going to observe for now and see which area. So S2 I'm looking for in my Nasdaq. Thank you, Dr. No problem. Just No, that's the reason I asked you the practical question, right? Because I know some things we have to go on our own. and you put in a trade, you got lucky, you got $300. That's okay. So we just next wait for an opportunity to get formed. Look, even though base was showing up, pressure was showing up, market open just shot towards down, right? So now it's heading towards S1.
because it wants to get into maybe value area first and test it to see. So I do have a first higher low. Let's see. When it breaks 56.41, it will start to make a higher high. Then I will place my orders at the bottom of the bar. So that's my plan right now. So previous high is a lower high. When it breaks that, it will make a higher high, right? So at that time, I will decide something. लिक्विडिटी का घर से कर सकते हैं। पूरी दुनिया से ओके मेरे सामने तो मेरे पास यूएई में फिर यहाँ पर था मैंने तो सिग्नल ही भेजना है ना। अच्छा ड्यूरिंग एनबीटी अगर अपन दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। हाँ हाँ आप देखें सिर्फ एमईएस मेरे पास छोड़ दें बाकी आप जो मर्जी मार्केट में करें एमईएस का मजे से नहीं एमईएस कर सकते हैं किसी और अकाउंट पे कर लेना जो तो ये मैं देख के लगाऊंगा कि कहाँ मुझे वेरी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट नजर आ रही है। ब्लेस यू।
डो नीचे आ गया तो ये भी आ जाएगा. देखिए Nasdaq another 6 or 7 minutes. We have until 9:45. The first impact news. It is medium. Price is heading towards night low. So the value area is sitting somewhere around 56.13. 10. तो मेरा है 13 पे खड़ा है. MES. Yes. Yeah. But I mean, 56.11. Yes, sorry, setup gave 2 points. 3 points. सर आपका हायर हाई पे जा रही है. नहीं, मैं अभी 30-20 को हायर हाई बनने दे रहा हूँ. First mid band from higher high worked, or SRES worked, so I need higher high on 30-20. Four minutes to news, guys. First round of news. 4 minutes, 9:45. ताकि मैं बॉटम ऑफ द बार से लगा दूं 30 तो कि हायर हाई मेरी हाई प्रेडिक्शन ज्यादा है ना कि प्राइस ने पिछला हायर तोड़ पिछला बना दिया है. I know you have explained that. Can you explain one very quickly? When you say good for currency, that is when like meaning the market should go up. I think should go down. I think currency go. कभी-कभी मुश्किल
कभी कभी बहुत नीचे चले गए पता नहीं चला नीचे जा Two minutes to news, guys. One minute to medium impact news. Is the news good news? Is it good? It's good. Let me double check. News is 50. So it's a good news. Purchasing manager index is good. So slightly better. Dow, sir. मुझे to be honest Dow से कोई परवाह नहीं है मुझे Nasdaq से परवाह है आपके हो गए $30 अच्छा सिर्फ 30 रह गए आराम से खेलिएगा हाँ all right now we can go and let's start to put at the bottom of the bar. I've sent the first signal. Everybody should have 30-20 bottom of the bar. 5, 6, 3, 7, 25.
So let's see. Bottom of the bar. And I'm moving that up again, bottom of the bar. So your first signal should be coming in at 5638.25. So let's see how far it goes. It's shooting up quite a bit. How fast? Because Nasdaq is almost getting into R1. Okay. नहीं मैं अभी मूव करता हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ. अब मैं बॉटम ऑफ बार से उठा के मिड बैंड पे आ गया. Yeah. 30-20. Because Nasdaq is shooting up. So right now my limit order is sitting at 56.42.25, 30-20 mid band. So let's see. No, that didn't go to. Come on. This went from the bottom of the bar to 2 points. If this is a rejection wick, I will move the order to right here, breakout. Let's see. Buy stop. 5650. So I said 5650. If it does a breakout, we'll take that trade, and there may be a bit of a divergence. Yeah. If this is a rejection, we should give us something. Give me a second. Custom. None. And buy stop here. 5050. Yeah. Yeah, so
Let's see. SIS उठा है इसका. Acha. Give me one. So right now I have two orders everybody should see. One at a mid-band of 30.20 and one of my breakout trade. Let's see which way it goes. Hopefully this mid-band won't fail. हाँ बगैर it नहीं ATM तो execute बाद में होगी ना. So we missed it by a tick, I think. I'm letting go of the mid-band trade now. It's stuck on this candle. Okay. Cancel again, re-put it in. Some users who didn't get buy stop. Come on, break this. And because if this has a rejection wick, it will shoot to R1. That's what I'm hoping for. कौन सा साइज है? All right, so no breakout there. So I'm still sitting at breakout. Let's see. In this case, if that rejection wick fails, that mid-band was a bit risky, right? So 4 more minutes to the high impact news. I've canceled all orders. I'm not in any order whatsoever. ये स्टेट कटेगा कि अगर hedge किया जाए तो कितना है? जो भी रेशियो होगी अगर hedge नहीं हो सकता Is नहीं होगा, कुछ पता नहीं. इतना तेज है. Three minutes to go to the news.
ट्राई कर सकते हैं वो रेशियो ट्राई कर सकते हैं हाँ, आंखें बंद करें, गैम्बल कर दें। $33 है, जिधर मर्जी जाए। I think it'll shoot up to maybe at least R1, right in the middle between R1 and S1, both. So I think Nasdaq R2 be ready and S2 be ready. This is going to happen fast. R2, S2 Nasdaq and R1 and S2 for ES. We're waiting for the news to done. 1 minute and 16 seconds. कल गई थी रात को आपने तो मेरे को हिट नहीं गया ये 511 तक गई। तो जरा दूर था मेरा ख्याल आपका वो 511। All right, 1 minute to go or less and 43 seconds. So keep your hands off your mouse unless you're trading evaluation and want to gamble. So, pledge? No, I got so many texts. I'm in the middle trading. We will do pledge on our own. I said, all right, no problem. It's there for you to, because a lot at that exact time, some were taking areas. They're like, they want to listen to the commentary rather than pledge. So, all right, boom. So it's charts are frozen and don't know where it went. Charts are back. So wait, let it go. It's all pending. Green, red, and so ISM is red. Jolts is job data. So spikes. So manufacturing prices have gone up. If that news is red, we're going down. Jolts, jobs opening. No, it still says pending. Actual pending. The other way. Red death, or it should go to less jobs opening. So wait for S2 at least, guys. So it is still a bit of a shock waves to hit stop losses for users. They go long, they go short, other way. So I think it was like a 20-point spike. So news is done, and so ISM news is bad and job openings is bad. Let's see if any stock prices are moving today. Tesla, some green, some red. सब कुछ गिरना शुरू हो जाएगा. It's okay. We'll wait for an area.
किसमें लेजेंड एपेक्स में जितने मर्जी वन डे है पीए में $600 और मुझे लगता है उन्होंने ऐसे कर दिया जब भी बात कर लो ना तो वो कर देते मैंने वेंसडे लिया था तो फ्राइडे मैंने कर दिया तो फिर मुझे ना हाँ नहीं पासिंग के तो नेक्स्ट डे एक दिन में ही है जो पी है उसमें 8 दिन ट्रेड करना है और मिनिमम $50 profit. I'm sorry $50 $50 minimum profit so Within how many trades? it doesn't matter okay. You can do micros minis anything but How many trades you have? doesn't matter they don't care I still think it can go to 55.62 bottom of the value area if news is bad so we'll go according to the plan first stop which should be S2 actually first stop should be top of the value area around 56.12 नाइट सेशन हाई पहले तो वो तो S1 है ना नाइट सेशन लो हाई नहीं सर वो तो S1 है but I've seen things fail on S1 with news time so मैं जिधर मर्जी जाए मैं अपने एरिया पे बैठा हूँ ऊपर जाए नीचे जाए आई डोंट केयर मैं S2 पे खामोशी से बैठा हूँ MES के S2 ये देखें मैं अभी ऑर्डर लगा देता हूँ 5603 पे राइट अब आप सारों को नजर आ गया होगा 5603 पे ऑर्डर लग गया मेरा जाके तो ये दिस इज माय ऑर्डर फॉर S2 why do I like S2 it is the low there's a dotted line going let me double check that dotted line you can double click on it that's the previous week's low so जिस मर्जी चार्ट पे लगाए 30 60 तो चार्ट ट्रेडर ऑन करना है ना पहले नो प्रॉब्लम and wait for Nasdaq to get to S2 as well the 180 zone 200 zone all right we're officially inside S1 and the night session low let's see if it respects it no respect whatsoever and boom boom आ जाओ जी आ जाओ मेरे एरिया पे आ जाओ maybe value area slightly respect no if you took S1 your stop loss would have been hit
आपका हो गया? नहीं, अभी भी एरर दे रहा है वो। फिर एक दफा निंजा रिस्टार्ट कीजिएगा। वो सिग्नेचर के बाद 30-40 मिनट लग जाते। Nasdaq is heading down sharp. Let's see if this rejection works on 30-20 on this bar. Instruments not subscribed for real-time data have been detected and have terminal delay. Yeah, अभी आपका वो एक्टिवेट नहीं हुआ। Look at that rejection wick trade. Solid rejection wick. Arctics देखी गई वो rejection wick. So that breakout gave you guys almost 14 to 11, 3 points. Huh? ठीक है? Very good. So we're very close to your S2. But Nasdaq is in S1. मेरे क्या होती है All right, we're 6 points away. Let's see. Huh? No, S2 ले रहा हूँ ना. S2 5603. And stop loss would be somewhere between 5600 minus 5. हाँ पिछले निचले नंबर से because we're in S1 for your Nasdaq 100%. ठीक है, ये फिर सारों को खींच ला जाएगी. It means कि Nasdaq your would भी आ जाएगी पीछे पीछे.
We're very close, guys. Very close. Very close. Let's see. Nasdaq 50 तो सर S1 है ना, देखें, लेकिन अगर डाउ गई तो I know some users will say, oh, I missed it. It's okay. But computer predicted some numbers for a reason. So hopefully will not break S2. That would be crazy, but because can happen. No. So we'll still. So all right, come on, man. 3 more. 56 और 3 पे बैठा हूँ मैं, क्योंकि 6 पे आके जरा बाउंस हो रही है तो all right, I have moved it down to 5600 now, maybe somewhere in between 56 or let's say 150. Yeah, I'll leave it. It's okay. Just a rejection, gap trade. One more time. Come on, pick it up. Yeah, Nasdaq, I'm waiting for S2. Yes, S1, a Nasdaq S2, ES is already very close to S2. I think luck is not in our favor today.
Moving it slightly to bottom range now, 5,600. Because it came so close to 0.5. If it penetrates it, so I moved the trade into 5,600. Yes. Yeah, slightly bottom. Yeah, it's stuck right now here. सर इसीलिए मैं अपना ऑर्डर थोड़ा सा बाद में देख के लगाऊंगा. अभी I've taken the order off. Just kind of see where does it penetrate. So buy level. मैं 56 पे लगाया. Come on, please don't do that. 2 more points I need. It's okay. अभी ये तोड़ देगी. वेट करें. पता लगे स्टॉप लॉस हिट हुआ. हाँ, please. I'll do a buy bid. There you go. मैंने यहीं से ले लिया. Let's see. There you go. 1 point, 2 points. We are in a trade. Let's see how far we can pull up now from here. नहीं मैंने उसको दोबारा ले लिया. मैंने चलती मार्केट में buy bid दबा दिया. Because it's gonna go up. I think it's kind of got tired. There you go. 2 points almost are done. There you go. 2 points are done. 2.5. 3 points, and we are done. 4 points, closing the trade. Done. There you go. 1 trade done. देखिए वो हुआ ये कि वो जब 25 से वापस चला गया ना, तो मैंने मार्केट नहीं दबाया, मैंने बाय बिड दबाया. तो उसी चलती गाड़ी से एक टिक नीचे से उठाया और उसको मैंने ले लिया, क्योंकि वो रुक गया था ना. बाय बिड दबाया, बाय मार्केट नहीं. So we are done our trade. 4 points from S. No, buy ask or buy bid, same. Because I kind of looked at it that, hey, it's not going down so much because that red line was at 25. It's okay. So our first trade is done with 4 points. Done. Area trade. I didn't take S1 CJ by Nasdaq can really, give you. So yes, I'm done for this. So the rejection जो होती है, उसी पे तो black candle बन जाती है, अगर बननी है. नहीं रिजेक्शन वीक का ब्लैक कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं. रिजेक्शन वीक तो है. रिजेक्शन वीक आती है, ऊपर जा रही है. कभी वहीं से नीचे आके फिर वहीं से ब्लैक कैंडल बना लेती है.
लेगा जी? नहीं, मैंने क्या किया, वो जब रहा ना और उसका बिहेवियर बदला तो मैंने बाय बिड दबा दिया। तो मैंने कहा 4 पॉइंट तो लेना यार, इतनी वेट, क्योंकि ओके इसका ट्रिक यही है, इफ यू सी द प्राइस फर्स्ट टाइम बाउंस फ्रॉम वेरी क्लोज टू द एरिया, then move it to the bottom range, because remember the first time it bounced, even if you have taken 3, you're still done, you're done your area. We could have taken more points, but 4 points is reasonable. So first time it came down as close to 5, then I'm like, all right, I'm not taking 3 anymore, so I took that 3, I moved it to 5600. Our luck, yesterday I missed by 2 points too, so I said no, this time I'm chasing. How do you chase? Buy bid or buy as. All right. So I will still stay in short because the news is bad, but we will do Nasdaq at S2 and ES at S3. देखिए रिजेक्शन में नजर आ जाए, नेक्स्ट कैंडल बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पे बैठे. So here, yeah. So if you see any rejection wick, see this was the bottom of the bar order. I didn't take it. It's okay. But if you see this rejection wick, right? So just stay here, and it will take you along with it. You see a rejection wick, you are at least guaranteed 2 ticks. The next bar, either bottom or top, 1 tick. One above, yeah. So because rejection wick gets confirmed at the next bar. All right, first trade done. S1 तो अभी रिजेक्शन में लगेगा ना, नीचे से आ रही है तो रेजिस्टेंस में ऐड करेगा. S1 would act like a resistance right now. From S2 to S1, look, 19 points or more. But let's see. Now Nasdaq should penetrate and go towards S2. We're back to where we started. No video. Everything is connected. Okay, let me double check. Huh? That was full of confidence. You took the trade from 5 by you changed it, but you took the right one. No, because I'm not missed. Yesterday 2 points से रह गया. ठीक है, कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है. मुझे पता है कि 5 पॉइंट नीचे गए, मैंने वैसे बंद कर देना है. ठीक है, मुझे अपने लॉस का पता है ना कि लॉस क्या है, कि 5600 से 95 पे गई तो मैंने बंद कर दिया. ठीक है, तो ये मुझे मालूम. इधर तो जाते जाते 4 पॉइंट तो पुक रहे हैं. तो that's the second bottom of the bar, mid band coming from. So S1 did act like a resistance. So anybody who watched that, the upper boundary worked as a resistance. Yep. Let's see if we'll go and test S1. So because news is down, I'm not going in any long trades whatsoever. Yeah, we did take a long trade, but that was the area trade.
So idea is again to wait and wait and wait and see. Breakout लिया, ठीक है. A good trade could be around expected. So the number we will take now is 55.76 for MES. So 55.76. Because inside expected low, there's a black line going on 60-minute chart that's falling within our expected low. By the R1 is still valid. If you want to take R1, we'll still take R1. मैंने SRES को लिया 15 दिन. Sorry? 15 दिन पे दिना. अच्छा, ठीक है. As long as आपको वो नजर आ रहे हैं, means के you are good. सर, yes. ट्रेडिंग के अंदर डैनियल का लेक्चर नंबर 1 जो है ना, उसमें 1 आवर के अंदर SRES का पूरा सेटअप है. ये आसान है. हायर लो आया, पहला ही लोअर हाई आ गया ना, तो आपको पता लग रहा है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. उसमें बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं होती. हाँ जी, नहीं, उन्होंने ये कहा है. Yes. Black candle to the upside. Yes. एक सेकंड, मैंने 4 साल ये लेक्चर सुने. वेट करें, ये देखिए मैंने क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि लोअर लो से हायर हाई भी जा सकता है, लेकिन जो ऑप्टिमल सेटअप है ना वो ये इसके अंदर हम लॉग इन करते हैं. सो ऑप्टिमल सेटअप है, यहाँ लिखा है ना कोर्स मटेरियल. तो मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है, स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन को. उन्होंने ये वीडियो बनाई है 22 मिनट की, जो मैंने ब्रेक करके दी. सर रिकॉर्डेड है आपके. Human psychology moves the market. Okay. Back candle means that going up from here, not going down, and this. ये सेटअप बन रहा है ना, लोअर लो हाई ऊपर से नीचे आ रही है. ठीक है, नीचे ऊपर आ रही है ना. This is my higher low, so first two alphabets are not same and the color is not same. How do you know this is your lower higher low and now price will go up towards your higher? How do you know? ये की पॉइंट है. No, you know. No. Actually, I was talking. When price was going up from here, right? So sorry. जब ऊपर से एकदम नीचे से मैं नीचे से बात कर रहा था. हाँ. तो इन्होंने बोला था कि जैसे वो सेटअप बनाया था इसका, उसके बाद जब भी लो हाई आके
लोअर लो पे जा रहा होता है ब्लैक कैंडल के बाद। हाँ देखिए, मैंने क्या करना है, ये जो हायर लो आया है ना, ये मेरी पहली इंडिकेशन है कि प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन अब वो जो की पॉइंट आंसर करेंगे ना, Price वो came down, कहेंगे it to start going up. And how do you know this is 100% confirm it's not going to go higher than this? It's my lower high. Is the black candle. Black candle means there's no way, no power on this planet can stop this market to reverse, right? So here price was going down, you get the black candle, means price will go up. Price reached this area, black candle. Each black candle here, the next black candle is lower than the previous. Lower or no? You see that lower and the lower and lower, it means my each steps are going down. So now tell me next step is higher than or no? So next step is higher. So now I'm looking for a step high and step high and step high. And now my step. अब यहाँ से दो ट्रेड बनते हैं। हम जो SRE का सेटअप करते हैं, so we enter right here after the black candle. Some users don't enter there. They'll wait for the price to come to the bottom of the bar after a higher high and then keep buying up. So same thing, अगर उन्होंने आगे बताया कि जब चलते हुए upside and up black candle. So in SRE setup, when you have a higher high, higher low, and the first lower high is your indication I'm going down. But what happens is when it makes a higher low and goes up, that number can keep changing. So if it breaks higher high, it's called the breakout trade. If it makes a black candle, it's called the SRES trade. So two trades are hidden. So some users will do a buy stop order here, because if the extension continues, meaning that or some users will enter at the moment black candle is confirmed, they will go down with the black candle. So here's the best part: 34 ticks for 30-20, 19 ticks for 15-10. Your black candles are exact. So the moment you have a lower high, you subtract from there 34 ticks or 4.75. Lately, I've been watching back testing. It seems SRE setup on 15-10 does give up at least a point. So 30-20, because you have to know it is already has traveled 8.5 points, right? So it may kind of break there, and there are chances that 15-10 setup on SRES is slightly better, slightly. But anyway, so this is, so I extracted the whole clip. So the true SRE setup is after a high, so the way I call them, these two would be black colors. So black, you will see a first blue, and then you have a blue, and you will see a first black, right? So yes, of course, price can go from lower low straight to a higher high. It doesn't have to respect this step in the between, and straight from higher high to a lower low. But the ideal setup is this: you have a steps to start going up and down. So that's why. So all of this, where is this available? If you go on your right here under the study, I've broken down the trades into, so you can watch your setups right here. हाँ, ये chart है. Yes. So first higher. तो मैंने और ये मैंने उसके चार्ट्स के अंदर दिखा दी हैं आपको, सर्कल करके देखें कि कहाँ से आइडियल शॉर्ट और लॉन्ग बनता है। कि आपने ये नंबर लिया, अब ये बना लोअर लो, लोअर हाई, पहला हायर लो बन गया। तो आपने ये नंबर लिया 8.5, यहाँ से लॉन्ग किया तो आपको कुछ देखें वो सही है। फिर उसका आसान तरीका ये है कि उसको उसके बाद बॉटम ऑफ द कैंडल उठाएं। एसआरई छोड़ दें ना 30-20 में, आप एसआरई का आपको पता लग गया है कि अब मैं डायरेक्शन ऊपर चली गई है, तो आप अपना ऑर्डर बॉटम से, अब ये 50-50 होता है कि सिर्फ आपने ये देखना है 4 माह में, 3 माह में, 6 माह में कितने स्टॉप लॉस हिट हुए। अभी तक मैं जब तक कर रहा हूँ 30-20 में 3 या 4 स्टॉप लॉस हिट हुए होते हैं, लेकिन जनरली वो 2 पॉइंट दे जाता है जनरली। तो अब जिस तरह एरिया मैं एक्सपेक्टेड लॉस से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट मिनिमम। S2 से भी काफी पॉइंट मिल गए थे, लेकिन हमने लिए सिर्फ 4 पॉइंट। तो ये है सेटअप्स आपके। सर ये देखें, आप लॉग इन करेंगे ना सुपर एरियाज पे, जहां वो ग्रीन पट्टी जा रही है ना
क्लिक हियर फॉर सॉफ्टवेयर मटेरियल यूजर पेज के अंदर जहाँ लाइव स्ट्रीम के ऊपर जाता है, उसको क्लिक करें तो ये जितने मेथड्स हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता कंपाइल कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेनिंग वीडियोस के एक एक को अब अभी थोड़ा फिबोनाची रह गया, वर्किंग ब्रेकआउट्स तो काफी लोगों ने समझ नहीं है, लेकिन क्योंकि 14 वेज है ना ट्रेड करने के। अभी आज जो हमने अपने सिग्नल्स के थ्रू ट्रेड लिया वो एरिया था, तो क्योंकि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि कौन जिसने 5603 भी लिया वो भी पास हो गया, 5600 वाला रह गया एक टिक से, पर आई मूव देयर अप स्लाइटली। तो नाउ इट्स ओके, चलो आइंदा वो ट्रेड आएगा। ये आपने क्यों ये शर्त लगाई है कि सिर्फ सिम में ही जो है ना स्टिकनेस वाला काम हो? इलीगल है। देखिए बात यह है कि मुझे ना बताएं कि आपने आगे क्या करना है, आप तक सिम पहुंचेगा ना, उस सिम को आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सिम भी कर सकते हैं, आप उसको फुल भी कर सकते हैं, 5 लॉट भी कर सकते हैं, 10 अकाउंट भी साथ जोड़ सकते हैं। मुझे आप भेजेंगे फोटो तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ सिम नजर आना चाहिए जब आपसे फोटो आए, क्योंकि अंदर लीगल कॉन्ट्रैक्टिंग मैं आपको ट्रेड सिग्नल आपके लाइव अकाउंट पे नहीं भेज सकता। सो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि सिम है। इसकी अप्रैल में कोई फी नहीं चार्ज कर रहा, जस्ट टू सी के इसकी, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, उनको पता होना चाहिए कि बॉटम ऑफ द बार क्या होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने बॉटम ऑफ द बार ट्रेड लगाना है, मैं अभी मिड बैंड पर ट्रेड लगाता हूँ, लेट्स सी हायर हाई तो नहीं लूंगा, ये प्राइस लगाए और एक ऑर्डर लग गया। अब मैंने आपको कहा यार मिड बैंड 30-20 पे ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, ये अभी ट्रेड एक टिक से नीचे रह गया, अभी लगेगा, तो मैंने ट्रेड भेजा है ना, तो रेदर देन आपको पता ही नहीं है, बल्कि वो रह ही गया एक टिक से, 2.4 पॉइंट मिल गए थे, मैंने 30-20 पे एक टिक से रह गया, लेकिन ये ट्रेड 2 पॉइंट का था, राइट। तो हायर हाई से प्राइस आ रही है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मिड बैंड 30-20 का 31 पॉइंट गया है, इसको थोड़ी सी तो रिट्रेस लेनी चाहिए ना, तो मैंने मिड बैंड पे बैठा था। अब मैं आपको कह दूं मिड बैंड क्या होता है, पर आपको अब नजर आ रहा है कि यार अच्छा यार मिड बैंड ट्रेड ये होता है। Could have taken it, could have been 2 points, but it's okay. मैं कोई ब्लाइंडली तो नहीं खेल रहा ना, नहीं देखिए वो है एक्सपीरियंस, सिर्फ 4 साल से इसके साथ बैठा हूं ना, जहाँ वो 56-25 से निकलने लगी थी ना, मैं कहा भाई मैं जा रहा हूँ, वो जा रही है, तो मैंने वहीं बाय बिड दबाया और साथ ले गया। और हाँ पहले आपने ऊपर वाले पे लगाया, फिर आपने बोला नहीं मुझे गड़बड़ लग रही है, नहीं क्यों, रीजन देखें, वो जब गिर रही थी ना वो आके 5 पे रुक गई, 5 से वो फिर 11 पे गई, ठीक है। अब अगर उसने दोबारा टेस्ट करना है तो क्लोज वाला मैं क्यों लूं, अपना रिस्क तो एलिमिनेट करना है ना। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, 5600 से 5 पॉइंट नीचे, तो मैंने कहा यार 56 पे ले आते हैं, स्टॉप लॉस ही कम होगा ना, तो रेदर देन 8 पॉइंट का मैं 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे लाया। अब हमारी लक कल क्या थी, एक्सपेक्टेड लो पे आई, 33 पे मैंने लगा, आई थिंक 30 पे लगाया था, समथिंग लाइक, वो 3 पॉइंट से रह गए, तो वी मिस्ड इट, बट वी पिक्ड अप अ डिफरेंट ट्रेड। I just keep watching this. Had this midband taken, I'm done 3 points right here. See, आपके सामने लाइव ट्रेड डाला, लेकिन वो भी एक टिक से रह गया. So, but right now I'm waiting for price to go to R1 on ES. If it goes to R1, that's where I'm. And why there's no video on? There you go. Sorry guys, fixed my video. सर ट्रेडर वेट का मसला है, एक और यूजर सेम एरर दे रहा है, वो देखे ना, उसके भी यही आ रहे हैं कि इट्स एन इशू विद ट्रेडर वेट चार्ट दे रहा है।
में काम करा दिया और नहीं मैं कोई ट्रेड नहीं अब मेरे पीछे एटलीस्ट 150 बंदा बंधा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि किसी का क्या डला है। चाहिए तो मुझे बोल दिया Okay. So I can't be like aggressive trader and say, hey, ye bhi yes, mid band, this, that. So I have to take very calculated trades. Look at how far market shot up from S1 back to R1. No problem, no problem. That mid band would have given us a lot of points, but missed it by a tick. It's okay. No problem. So I will next place my order around 5662 R1. ये पीछे MES चल रहा है सर। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। R1 62 देखते हैं कहाँ से बाउंस करती है। Nasdaq, I'm waiting for R2, guys. Just telling you. Order submitted. Sorry. Add R1. So if you look, that's my order right up there, 5662.
ये तो स्टॉप लॉस Now the breaker. बहुत सही है अच्छा नहीं इसमें सिर्फ 100 बना रही है एक चीज से आपको ये है $10 आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस तेज होता जाएगा, फिर ब्लाइंडली जान डालेंगे वहीं से बनेगा, क्योंकि आपको सेटअप नजर आने शुरू हो जाएंगे। ब्रेकआउट दोनों मैंने ब्रेकआउट जबरदस्त, ये ठीक है, ठीक है। 2, 3, 4 माइक्रो में एक एक पॉइंट ऐड होता जाए, 10 पॉइंट एंड में बन जाते हैं। सिर्फ SRES का मसला बिगेस्ट इज द स्टॉप लॉस इज टू फार ऑन 30-20. 15-10 is still only 5 points, but 5 markets mhm. 5 MES Yeah, that's good, that's perfect. If this is a rejection wick on a 30-20, it will go far down. If this is no change, next bar came. As per the 240-minute chart, it should go to extreme high. When? Nasdaq. When? I don't know. B3T9. Let's look at that. B3T9. MES June 06. Yeah, you're fine. How come you didn't? सर लेजेंड्स में अगर आप 4 टिक से कम का प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको They generally have a problem because that's just too high frequency trade. तो मतलब सर मतलब 1 पॉइंट के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। 1 पॉइंट के लिए तो एटलीस्ट बैठे हैं। तो मतलब मैं तो जनरली वही कर रहा हूँ। 2 टिक्स 2, 3, 4 टिक के बाद 4 से नीचे आपको अलर्ट आ जाएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड डिनाइड। तो नहीं, एवेल्युएशन के बाद आता है कि आपके हमने सारे ट्रेड देखे हैं, आप तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड मार रहे हो। 4 टिक्स तो मिनिमम लेना। ऑलराइट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स R1। मतलब इक्की दुक्की बार हाँ, पता लगे आपके सारे ट्रेड 2 टिक वाले हैं तो एक फिर मैंने सुबह मेरे को दूसरा ट्रेड मेरा उजाला चला गया I will decide near the area where to enter.
ऊपर बनी एक ही अकाउंट में जैसे लेजेंड है इसमें एक ही वक्त में एमईएस में प्ले कर सकते हाँ हाँ, no problem. हैं They don't care. They don't care. साइमल्टेनियसली Yes. दो ट्रेडर में एमईएस के लिए दो ट्रेडर में यूएस के लिए शुगर भी इशू सिक्स के लिए R1 पे अभी नहीं कोई लगाया, अब उसके करीब आएगा तो देखो। या सो थोड़ा सा देखता हूँ, so I'll put in a trade at that price. So it's I've taken it to 63.75. नाइट का कितने लगाया 63.75 नाइट सेशन 63.15 ज्यादा तो नहीं होती एमईएस और ये हमारा क्या है एमईएस और ये बंदे मैं उससे ट्रेड करते करते $100 रह गया थे वो कट हो गया very good. Night session is 63.50, so I will put it there. अच्छा वहाँ 63.50. कल से टैरिफ लग रहा है सर लगेगा, और देखिएगा मार्केट कल भी बगैर न्यूज के ही 100 पॉइंट मूव होगी।
you're on that, so it should be. Very close, very close. 5,663.50. Come on, pick me up. ऐसे ना करो. नहीं जी, किस्मत नहीं थी. नहीं. Missed it by what? So I'm changing it now. 63. It went to 62.75, right? So अभी किसको लगानी चाहिए? टॉप पे लगाना चाहिए. ये तो यहाँ से है ना बीच में. ऐसा ठीक ठाक जी. दोबारा अटेम्प्ट करेंगे इसको अपर लिमिट के साथ. वेट करें, वेट करें. इसमें तो ढंग से हमको दिया ही नहीं है कुछ. इसमें बहुत थोड़ा नीचे आती है. Join bid here. Let's see. Just gives us anything. सर मेरा तो ये पास हो गया है. हाँ, तो उनसे चैट करें. किया सब लोगों ने भेजा, लेकिन अभी मेरे को कौन सा चाहिए? मास्टर 25,000. मास्टर स्टार्ट प्राइवेट वाला. प्राइवेट वाला. उसमें अपना कोड नहीं चलता? सुपर कोड उन्होंने 150 का है. ओके ओके. मैं लोग से क्यों नहीं करते? मैं नहीं दिया. Come on, push it down. It's pushing up again. We saw about a point, but didn't take it. It's okay.
Sorry? नहीं ਉਹਦੇ ਚ half whatever your threshold is. Threshold कितना आपका होता है? So 65 बनाना है. Yeah, threshold तक. Come on, pull me down from the area. It all depends on Nasdaq now. No. No problem. Looks like it may take my stop loss, so I'm hanging in there 2 points. No, Nasdaq wants to push up to R2. So 5 points. यहाँ से R2 कितने distance पे? Sir, R2 बहुत करीब है Nasdaq की, सिर्फ 50 पॉइंट है. -50 पे close करते हैं। अगर R2 को बोलते हैं। अभी वेट करो मुझे 2 काउंटर हो रही है R1 पे। चलो नहीं, मैं तो ऑलरेडी ट्रेड में हूँ एरिया से. पीछे देखें, मेरा स्टॉप लॉस 70 है. कैसे हो आप? अच्छा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मेरे में हुआ है. एक एग्जाम पास किया मैंने. Yeah, 5 points. It's gonna push up. $1.5 point from my stop loss. Let's see. Nasdaq is almost in R2, guys. Be ready for the Nasdaq. जीरो में जाके एक्टिवेट करना उसको. नहीं, वो खुद ही करेंगे आपका कैंसिल. यस. Nope, it's not stopping. Well, it's gonna take our stop loss 70 because Nasdaq is not stopping.
No, bro. No. Oh, that's went from 71.25. Only Tesla pumping up. Yeah, 272. Nvidia got up to 109. Everything is green now. Still wants to go up. नहीं, मैंने R1 से तो stop loss ले Nasdaq R2. Very close though, 550. It got to 556. We are at 580. $557. Nasdaq come on into 580. विक्रम भाई आपका ट्रेड निकलने वाला होगा almost 92. All right. अगर R1 में आ गई ना R2 में Nasdaq तो आपका ट्रेड निकल जाएगा. $62. मेरे में वो नोटिफिकेशन आता है ऑटो रोलर नोटिफिकेशन तो उसको yes करके सेव करें ना. हाँ, one time yes and then save it. का ऑप्शन है यस एंड नो का ऑप्शन नहीं yes करें फिर वर्क स्पेसेस में जाके सेव करें. आपके 30 नहीं पूरे हुए. मैंने माइक्रो हाँ लेके स्टॉप लॉस तो 59 ना 60 बना. ओ 60. चलो अब $2 रह गए. 40. सर कहाँ सेव करना है. Control center, workspaces, save. All right, we're almost into your R2. 76.
Nasdaq तो 80 से लगा है ऑलमोस्ट R2 आ गया. $84, $85. नहीं सेम 8.1.4 वो आता है उस पे स्किप दबा दें. Nasdaq तो आ रही है एरिया से आगे. ये आपने लॉन्ग किया हुआ था शॉर्ट? तो लॉन्ग में तो प्राइस ऊपर ट्रेडर वेट साथ खोला हुआ है. तो उसमें ओके अभी तो R2 के अंदर है इस वक्त प्राइस. ठीक है. Nasdaq is inside R2. Still pushing up higher. Bad news, but Tesla is pushing it up. Tesla push हो रही है. Sorry, सिर्फ Tesla is up almost $16 from 260 to 275. है? हाँ लेकिन मैं भी ट्रेड में हूँ. Nasdaq वाले अभी निकला नहीं हूँ. हाँ Nasdaq में MNQ में 1 2 ठीक है. MNQ because reason is now both are synced almost. ES and Nasdaq very close to getting synced. R2 हो चुका है. आपका R2 का ट्रेड बनता है. R1 पे तो रिस्पेक्ट नहीं की ना, तो मेरा स्टॉप लॉस लेके आ गया. So because Nasdaq is not stopping yet, it is pushing up very fast. 600. आपका ट्रेड निकल गया होगा ऑलमोस्ट. आपने भी आखिरी It's up to you. देख लें क्योंकि it's pushed up too pretty maxed. My yeah so it's your call because Nasdaq is starting to take a retrace now. जी सर. Any does खोले.
Whatever minus 700. हाँ जी केड़ा किथे ट्रेड खुली है हाँ एक सेकंड नहीं केड़ी पोजीशन खुली है नहीं नहीं लेकिन नहीं किथे खुली हुई है बंद है सर नो प्रॉब्लम ओके थैंक यू ओके R2 डन जी Nasdaq डन ले लिया जी प्रॉफिट वेरी ठीक चलो कुछ भी हो गया 80 से 60 20 पॉइंट मिल गए यार R2 डन to the dot but unfortunately it took my R1 here of stop loss or है because now it will go and test your R2 हाँ लेकिन वो शायद कैंसिल हो जाए पहले तो अभी R2 की तरफ जाना है exactly to the dot 19,600 to the dot लगा के आई है जो हमारे कंप्यूटर ने कहा था सॉफ्टवेयर ने so the to the dot R2 is done and it went to S1 finally we're starting to see some green but tomorrow April 2nd Mr. Trump don't take R2 again please 261 339 R2 हाँ R2 डन मैंने नहीं S2 नहीं आया S2 Nasdaq का नहीं आया S1 maybe one more time is trying to get into R2 let's see because ES
उसके बाद तो पोजीशन नीचे नहीं होती वो माइक्रो भी चलना किस चीज का यार R2 बेटर है क्योंकि R2 we will get to very close because Nasdaq is above R2. So Nasdaq next number, please take expected high. $627 and yeah, should be okay. SRE setup to hell again. I want to turn the background into red and then start selling top of the bar. SRE setup gave you guys 2 points.
Or 30-20 SRE setup gave you 15 point, almost 6 points. Now I'm setting at top of the bar. If you look, my orders are being sent top of the bar. It's coming from a higher low, but it's okay. किसके? नहीं. One more point, it will start to make a lower low now. There you go, double bottom, lower low, I'm at top of the bar. I'm keep moving my order top of the bar. नहीं सर, मैं अभी पिक किया है. Let's see. 1 point done, 2 almost showed me, which is very close to mid-band anyway. Perfect, 2 points. Now I'm trailing my stops. Oh, give me some time, man. Buy stop. All right, now we are, let's start locking in. We saw 2 points, didn't take it. Don't be a rejection, Vic. Because this time my ATM didn't open. Come on down. There you go. Now I'll start trailing. I put it at I've locked a point. There you go. Now I'm just trailing my thing. 2 points. Done. So this is called top of the bar order. Got a couple of points out of this. क्या चीज सर? वेट कर लें, अगर ना हुआ उनसे चैट कर लें लेजेंड के बॉटम राइट पे कि मेरा डेटा 90 मिनट हो गए खरीदे हुए. So
Can you open your ES chart, please? Yeah. 2020? Okay. I just want to compare because so there's an individual inside his charts and I'm matching with my chart. Okay. What's that? Exit out. Okay, got it. This one comes back. Because it's going to be the following later. Something comes. Okay. All right, thank you. Why would I? Again, sold at the top of the bar and got a couple of points out of this. And now you can trail. Trail, you see. That's your entry is top of the bar. I'm trailing right now, almost 3 points. So another top of the bar order entry. We have a first lower high, higher low. Breakout on 1510.
ओके जी, टेक केयर। तो सर पीए में अभी $600 पर डे मैक्सिमम। 1500 ना लूज हो, 10 दिन से पहले ना बने बस। शाम है, आप जाएं सुपर एरियाज की टीम से ना चैट शुरू करें, वो आपको करवा देंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम। सर अगर गैस अकाउंट खोलना तो जीएफ पे खोलना, एएमपी सस्ता है, जीएफएफ $100 पर मंथ लेता है। एएमपी का अपना प्लेटफॉर्म। हाँ, ये वो नहीं कर सकते। फिर प्लेटफॉर्म अच्छा है। फिर निंजा ले, जीएफएफ का निंजा का प्रोवाइडर ले लें। के साथ में टेक प्रॉफिट भी ये ले सकता हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ले लें अगर इफ यू नो एंट्रीज ठीक हैं तो सही है। ठीक है। दो रिजेक्शन होता है। उसको भी तो पता नहीं है इसमें तो देखते हैं। ओके सर, थैंक यू। मेरा जॉब है अभी में Oh yes.
Okay. ES का ऑर्डर आज का मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अगर हायर हाई बन जाए तो मैं ग्रीन शुरू कर दूं बॉटम ऑफ द बार से। Mid band from higher high, no issues, 2 points. Back into R2 zone, trying to get into R2 zone again. Nasdaq and ES. Yes, sir. All right. Sure, absolutely. About the ATM strategies for auto trade. Yes. So, Okay. So first thing is first, the way we do this is we set an ATM. So in this case, we want to set a stop loss. For example, 20 ticks. I want to set a profit of 60 ticks. 60 ticks means 15 points. So what this will do is the moment your order is picked up, it will open a bracket. okay, so you should, but even if it is on 30-20, then also 60. Doesn't matter. Okay. That's irrelevant to the chart. It is just, will open a bracket. Will set your stop loss at 20 ticks, which is 5 points. It will set your TP at 66, 60 ticks, which is 15 points. And now it opens a bracket. Yeah. Now what you want to do is, this is a standard bracket. So let me show you. I'll just save it here. Let's do a buy ask. I buy ask, it opens a bracket. Buy stop and sell stop. So in order to, this is my stop loss, this is this. So this is straight there. So next I want to do is, I want to go, it says stop strategy. Yeah. So you could go and customize that. And you can here write down that I would like to start my profit after 10 ticks. So if 10 ticks, because as per Daniel and everybody, the 15-10 chart has a 10 tick candle. So we want to start, 20 has a 8 tick. yeah, but at 20 ticks, 30, 20, 15, 10. 10 ticks bar, 20 ticks bar. 30, 20 is a full bar, is 20 ticks. Okay. So in this case, what I would like to do is chase my profit, but start it at 10 ticks. Okay. So this is the setup you would put in. 10, 11, 10, 1. Okay, so 10 is the stop. Okay. No, 10, it says trigger my profit. Okay, so trigger the profit. So it means as soon as the profit goes Hits to 10, the stop loss will move to automatically- 0. Your entry, wherever you are, you entered the trade, it will move it there. Okay, so you put that at 11, right? Yes. Now now what it's saying is, at 11th tick, just keep coming after me 1 tick at a time. So let's do it this way. Let me do a buy bid. So I entered now. Either it will hit my stop loss or TP, right? But if I get into a profitable trade, there's a bit of a divergence, should have taken a sell trade, but it's okay. So if I go into green, I will, at 10 ticks, I will have my stop loss going to break even. If I saw $112 or $12, 112, there you go, my stop loss hit, let's do a sell bid. Okay, so now I'm selling because the trend has changed to the bottom. But if you look at 2 ticks, I'm 37, but watch what will happen at 112. Here. Look, it's chasing now. So I put it in a break even. So I saw $112 and now I am
it's selling to the downside, right? So as I'm making more profit, it's locking my one tick at a time. So now 130, you see it's automatically chasing. This is called an auto trail. So I'll explain you on the board one time. I did a, because the background changed, I saw a divergence, I hit sell. There you go, now I exit out of a trade. I sell again, I sell here. Because trend is down, I want to sell. Both charts are green, I want to sell. Why would I want to? So, but the moment I will see $112, which is 10 ticks, it will put my stop loss at 0. So remember, you will always leave some money in the market, 10 ticks or so. That's how trailing works. Yeah. The tighter the trailing would be, the faster it will move. So 10 ticks is optimal. Even if it's a 13, 20 cap. No, it's not, because you are really 10 ticks is more than enough. More than enough. Doesn't matter. Even if it's 15, 10 or 15. Correct. So 10 ticks is it's good enough. Other side has an SRES setup. So I'll go a buy ask. Let's see. So if I do a buy ask, because now a black candle is about to form, lower low, lower high, higher low, it should take me in with me. But the first $110, $112.50, you're not making a profit, you're going break even. So remember that in a trailing, because usually people trail either from a mid band going up, that if it's so you would say either I want to take this much fixed profit or auto trail. There you go. It is going into slightly green, but until it gets to exactly 10 ticks, $112, the bottom stop loss, you will see it move out of it. Look where my stop loss is, right here, right? It is right here. So the moment I go into green, this will go and put it at my break even. But it has to happen after 10 ticks. Some users will say, put me after 8 ticks at a stop loss move. So you would then set it up 8, 9, 8, 1. Exactly. So then if you keep the frequency at 2, that means it's going to come up. Exactly. So but that's too close. Close No. the gap. बहुत close है अब देखें अब. So just trying to give an example, the moment you will see $112 is by the way, this is how most people lose a trade. They think price is going up, hit buy. They think price is going down, hit sell. Don't wait for a setup, and then your whole account is negative. Now, the moment I will see $112, it will take that stop loss and put it into like watch this 112 what break even. So you see how it automatically moved my stop loss to the top of the bar. So now as I'm going down, it will take, now in this trade I will not lose money. It didn't. So let's do a sell bid again. Trend Maybe is 1 down. tick, 2 tick, whatever it is. You're Correct. Still getting some. That's locked. So now I'm in a trade again towards sell. Background on both is red. And let's see. Again, you decide where would you like to move the stop loss at how many ticks profit. So auto trail, so the fixed is this. If I go back in, close this, and I say fixed, and I just want to do 20 and 20, for example, every time I do a trade, it opens up 20 and 20. Some users don't like to trail. So you can move this manually. Just say, all right, I don't want to lose. So just moving this will manually move this. सेटअप यहाँ मैंने ट्राई की थी लेकिन वो रिजेक्शन विकेट तो मुझे लगता है चांसेस नीचे हैं ज़्यादा. So okay, see, now I have $37. You can manually move it to break even. All right. So in this case, you're not waiting for computer to see 10 ticks
And now I'm at 62, I will lock in maybe a slightly one tick. This is called the manual trailing. You open up the bracket, 20 and 20, and then just keep chasing. So I saw it's 32, there you go, it filled up. So you can do this in manual fixed and trail yourself, or you can do auto trail. But auto trail, you need to give it a profit trigger, from which point I would like to get break even. So I go buy a bid again. It opens up a trade. Now, because I'm seeing this setup, hopefully will, but if this is a rejection wick, it will, though this bar will decide I want to go up or I want to go down. Yeah, because there's step one, step two, step Yeah, three. you can, but I kind of gets a little complicated in terms of at which step do this. You can play with these settings and see the optimal. I generally just take the step one, meaning that hey, just I want to keep coming after. Maybe you could put the step as two as like if the profit goes from 10 to 15, Yes, and then just then keep what you do is then you keep the move with the number, exactly. increase the frequency to 2 or something. Correct. So you can do, hey, the first 112, keep it at 10 ticks, but from 112 it goes to 150, bring my stop loss to 4 ticks. So I'm yeah, yes. So you can play with lots of these options in their steps and custom 1 step, 3 steps. So I go buy bid. Let's see, buy bid, picked it up. I'm going up $25. I just need to know on 30-20 if this is a rejection wick or this is a black candle because that will decide which way. So, see, there you go. First 2, 3, 8.5, one more tick. So I'm 37. You can go ahead and move this to say, hey, this is my stop loss. Hey, this is my stop loss. But the optimal stop loss is 10 ticks, bottom of the bar. See, if I'm here, because sometimes you got to give it some breathing room. If you put it too tight, it will pick your stop and then shoot in your favor. And then you're like, I should have taken it, could have, would have. So right here is 25. You can say, all right, I want to go to break even. Now you go to, so in a slow market, I prefer it to do manual because then see it shot up and it actually picked up my break even. So buy bid again, enter here. So it's really personal choice on going down, sell bid. But the video is there on super areas, tells you step by step on how to do this. Okay.
तो जो एनडीटी आपने शुरू किया ये आप 3 लेकर सबका बता देते हैं कि लोगों की मर्जी आगे साथ में जाना। आपके पास गेट एक्सेस है, आपके पास है, मेरे पास नहीं। बट आप बताते हैं कि ये जैसे 150 के लिए लेना नहीं, मैं ट्रेड लेता जाऊंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। ये टॉप ऑफ द बार है, ये मिड बैंड है, ये एरिया। जिस तरह आज हमने S2 लिया, R1 फेल हुआ, S2 पास हुआ, और दूसरा आपके 2 रिजेक्शन विक्स वाले ट्रेड लिए, वो पास हुए। तो 4 लिए। मुझे कोई बहुत अच्छा सेटअप बना है तो फिर वहां से लूंगा। जिससे नहीं सेटअप बनेगा मैं नहीं ट्रेड लूंगा। हाँ एग्जैक्ट, आप वो लें कुछ लो। उन्होंने लिया सुबह वाला S2 और 3 पॉइंट लेके बंद कर दिया, राइट। अब नहीं, मैं तो सुबह 9:30 आके ऐड इन हो जाता हूँ। हाँ, तो आपको अप्रैल ये चलेगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि बंद हो जाएगा। फिर $250 US पर मंथ लेता हूँ मैं इसके, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव सर्विस टू रन। Bit of a bad news I gotta announce. Legends, I believe, changed their master account into live trailing threshold. So Legends master account, I gotta check. Someone is, I think they just changed it recently. So which means there's no discussion. they live trailing. So if you saw 100, you didn't close it, whatever deduction, they're Bullnox, Legends, Even Apex is the same. same है. So say एक कंपनी थी जो मैंने अभी उसको कंफर्म करता हूँ. So which means if you have a TP of 100, but if you close at 75, so they You will, lose. So I gotta call Greg. Thank you for calling Legends Trading. Your call will be answered in the order it was received. Please wait on the line, and the next available agent will be right with you. आपने क्लोज किया तो so then you have to keep some more money in the threshold. या 8 टिक लें, 12 लें. But अगर आपने टीपी रखा ही नहीं in that case, नहीं, वो ठीक है. देखिए, प्राइस आपने $100 लगाई टीपी, वो 100 पे आई, फिर 50 पे आई, फिर 110 पे चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर 100 से वो क्लोज हो गई 0 पे, तो उन्होंने आपका $100 थ्रेशोल्ड काट देना है. लेकिन अगर आपने 100 पे टीपी लगाया तो 100 पे तो आपको बाहर कर ही देगा वैसे. नहीं, अगर आपने टीपी नहीं लगाई, आपने ये कहा था ना कि टीपी ना लगाया. वो तो टीपी ना लगाया तो मतलब जितनी भी ऊपर गई हो, हाँ, वहां से काउंट हो रहा है आपका लॉस. वो तो आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ये सारी कंपनियां ये इसी की तरफ जा रही हैं. फिर अपने पैसे डालेंगे और क्या है, अपने 1500 डालेंगे या पर्डिया पे जाएंगे. पर्डिया में अभी तक तो नहीं आया चेंज. So then keep small profit. 2 points, 3 points, get in, get it out, get it done type of deal. 8 ticks too. Yeah, I just got a chat. I will talk to Greg to see when did they change this rule. But that means you gotta get in with a select profit. That R2 worked. We missed it. I was not paying attention. I don't know if anybody took R2. Please, R2 worked to the dot. Itna pyara R2 chala, I don't know. I was talking and R2 is missed. R2 is done, guys, for ES.
नहीं दिखती है सारी चीज ठीक है लेकिन बात नहीं बन रही है So it is live trailing until $1,600, just like bull longs, just like until you आपका जो बफर है ना, उसके बाद फिर एंड ऑफ डे सारे ही हो जाते हैं, उसमें एपेक्स भी हो जाता है, बुल देखिए समझे इस तरह है। 1500 आपको मैंने दिया, ठीक है, लाइव में। पहले 1500 तक वो कह रहे हैं हम आपको लाइव ट्रेलिंग दे रहे हैं कि आपने 100 देखा 50, लेकिन एक दफा 1500 को कर जाए फिर आपका एंड ऑफ डे आ जाता है। लेकिन वो बुलनक्स पे भी हो जाता है, वो नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा मास्टर्स में ऐसा नहीं होता, जा सकते हैं। हाँ 1400 रह गए। So let me explain quickly this because I have now this is going to cause a bit of a trouble to. So we gotta put legends back in. So legends, Bullnox, Apex, and take profit, TPT. So let's say all PA, this is called the master here. So no company is now allowing end of the day threshold. What does that mean? You started with $1,500 here, Bullnox. If you have the 26, I think उनका क्या threshold देते हैं? 2500 देते हैं. 2500 देते हैं. 2,500. Apex, let's say if you have 1,500, TPT they give you 1,500. This is the 50K account here. So what is, there's two words used, end of day and the live trailing. End of the day means you will get whatever you see, you will get. That's just a word they use. Meaning, what is end of the day? You took a trade here, 5,600. Price went to 5605. And then you ended up closing your trade like Auto Trail at 5603. You're still in profit. You're still here. Your profit was what? 250. 5 point gain, na? Here, your profit is 150. So let's say if you have a ledger of date, day one, 1,500 and 25,000, and you close this trade at plus 150. Yes, you got 150 and you didn't get a deduction in your threshold. This is a problem in every company now in a master, except Perdia, is live trailing, EA is end of day. So let me write that. EA Legends end of day. Take profit, end of day. These are the two companies that offer in the first stages end of day. But in the stage number 2, every company is now saying, we want you to lock profit. Whether you're doing Apex, Bullnox, Legends, what they are saying is, open your trade at 5,600, know when you're going to exit. So you want to take 2 points or 3 or 4. So some users like fixed ATM, some don't. From a mid-band, generally you can get 8 ticks from a mid-band trade. No problem. 2 points आ जाते हैं. तो 4 ticks लॉक कर दें यार कि 4 ticks के बाद निकल जाएं ट्रेड से. So in the same situation, Yeah. the first scenario, Yes. if you take it in the live trailing, what would have happened? So this is live trailing, by the way. In a live trailing, if you take 5,600, you went up to 5603, 05, 5605, and then you close your trade at 5603. This is plus 250. This is plus 150. So this is how your ledger is going to get written in on Trade08. What they will do is they will give you 150 because you earned it. But on the same prime,
They will deduct $100. And then you are like, what happened here? Why did my threshold went down? This is a problem with every funded company now, these days. So, So suppose this is the only trade you took that day. At yes. the end of the day, the threshold will be $1,400. So next day you come, your account is saying you can only lose $1,400. This was a problem. Only this company didn't have a problem. Now in a master, they have included. They can change the rule anytime. Maybe they're giving out more payouts, and everybody is only in master. Only in master. So then you'll have to do again a winning trade next day. Yeah. So if you want to, if you took in winning trade more, I don't see much of a problem here. Honestly, I don't see, because most people want to go get in couple of points, right? And every day, maybe 5 micros, couple of points, 2 or 3. Like today from S2, we made 4 points. We lost a few points up on R1, but I made it back on your 2 retracements. So it's fine. If you make that 2 points again, it will come back in. and suppose it hits your stop loss in this नहीं, फिर तो आपका डबल लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. minus 250 Yes. on the live Yes. and then minus देखिए, अगर आपका यहाँ से गिरती है प्राइस और आप नहीं ब्रेक इवन पे, फिर आपका माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -250 हो जाएगा, और आप कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और एकदम 250. अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अपना टीपी लगाया फॉर एग्जांपल $100 प्रॉफिट पे, ठीक है, और आपकी मार्केट ऊपर जाती गई तो इट वेंट अप टू $90, ठीक है, बट इट केम डाउन. Yes. स्टॉप लॉस 150 पे, तो आपको 150 स्टॉप लॉस लेके निकालना. 150 प्लस 90, ये वो लाइव ट्रेलिंग इसको कहते हैं, कि जो हाईएस्ट वाटर मार्क है ना, हाईएस्ट पॉइंट आपके प्रॉफिट का, वहां से आपका लॉस स्टार्ट होता है. So basically, in simple language, they are making more money from PAs. Yes. ताकि ज़्यादा लोग वो हाँ, फेल होके तो नीचे आ जाए तो एग्जैक्टली. So the only company I think I can now company that I can think of is giving you true end of day is per dia so far. But when do they start change हैं? वो फिर महंगे वाले हैं ना, वो 7.5. नहीं, अभी तक चेंज नहीं हुआ, अभी तक नहीं. उनके ज़्यादा पे आउट होते नहीं हैं. उनके पे आउट्स इतने ज्यादा नहीं, यहाँ और एक अकाउंट अलाउ करते हैं ना, यहाँ तो लोग 10 कर रहे हैं और फिर उनके So legend is once you have all of these companies say make this and then we'll drop this condition. Like the moment you cross 1500, none of this matters anymore. पहला 1500 मुश्किल है ना, पहला 2500 मुश्किल है, पहला 15 एपेक्स में भी, टेक प्रॉफिट में भी, जैसे ही आपने अपना थ्रेशोल्ड दिया वापस, तो आपको फिर जितने ऐड करेंगे फिर आप एंड ऑफ डे में चले जाते हो. तो सिर्फ यहाँ का टारगेट है. और अगर एक बार आपने मान लो कि लेजेंड्स में आपने अपना 1500 अपने पीए में अपना थ्रेशोल्ड बना लिया, हाँ, उसके बाद में इसका पे आउट के लिए you have to wait for a certain thing or you can do it anytime. All you have to do for legends, you have to turn 25,000 into 27,000. This is $2,000 you earned, right? Okay. So they will give you $1,500 from it. No problem. And then 1,500. So now you only have $500 left. Then again you have to bring it back to 27,000 to get it. Exactly. So that's the cycle. In this, they want. I know it's a bit of a disappointed. Why would they change from a end of day to live? But just got the news today, so I said, "Hey, master, now you're gonna have to start putting in a full TPs out there that hey, I'm in this trade for 2 points and I'm getting out. I'm in this trade for a point and I'm getting out." You know the idea of we just said about trailing. So if you took that trailing ATM and did this 56,000 and the price goes to 5601.25, this is $112 of profit, right? So you saw your P&L at 112.50. Your stop loss
moved right here. And you're like, in this trade, I don't lose any money. However, what happens is, now if you close that trade, your threshold has gone down by $112. So don't use a trailing ATM. So just say, I want to go in, I want to take 2 points, 3 points, 4. Like today from S2, we took 4 points and called it a day. If you open ATM, of course, like you cannot have a stop loss. You have to have a stop loss in case the price. मैंने नहीं कहाँ गई है? नहीं हाँ अगला expected high, right? फिर वहाँ लेंगे. So idea is you go in, whether you take a mid-band trade, top of the bar trade, area trade, put a fixed ATM. I want to take 2 points, 3 points, 5 points, 10 points. I don't care. But maybe put your stop, like maybe you say, I want to break even at 4. But that will be too quick. It will come, suck you in, and then shoot back up, right? So why do I know this? Small profits, that's better than, I know exactly why it triggered this, because last time I had a guy who, this is why if I am a funded company, it's not to like put you guys down. Majority people have a $1,500 account, right? So let's say if they have a $1,500 account, they come in the morning and they go 2 micros, like let's say M&Q. And they keep running the trade for 6 or 7 or 8 hours. And then they close the trade at plus 150. Now, this is a problem for Legends or any companies who's offering you money. You're not trading. You open a trade and you let it run, because Nasdaq, the way mostly does, it goes up 300 points. So if it went against you 300 points, you're only down to minus $600, just saying, right? And then comes back end of the day positive. So everybody is abusing the system by opening a trade and not trading. So they're just saying, एक trade छोड़ दिया, एक माइक्रो से लोग 200 निकाल लेते हैं MNQ पे, ठीक है? तो उन्होंने कहा भाई इधर जाए या इधर, मैंने ट्रेड खुला छोड़ा हुआ है. शाम के 5 बन गए और उन्होंने देखा $25 बने हुए, ट्रेड बंद कर दिया. So they're staying inside a trade for 6 hours, 4 hours. So this is not good for this company. So it means they just want to get to this level, withdraw the money and leave. They're not looking for these type of traders, right? And Apex explained that very clearly. Apex has an even more difficult rule. Apex says, so to combat this issue, Apex says, if you went down negative 30%, we're not going to pay you. So you can't just take a trade and leave it open and say, because you can, if you have $1,500, you can leave a trade open minus $1,400 and maybe close it at plus $75. For 2 years, people were doing this. But they open a trade, let it run. Minus 14, 13, 12, and then it shoots back up, and then they end up closing a trade. But to combat the Apex says, you know what? No. If you take a trade and you go negative certain point, you're done. So they close the trade? Yeah, they will close your trade for you. And So negative minus. हाँ exactly. तो हर कंपनी, मैं अगेन बार बार कहता हूँ, ये जो फंडेड कंपनियां हैं, ये आपको सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए कि आप जाएं, इसको देखें कि यार मैं ट्रेड लगा रहा हूँ 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, मुझे क्या मिड बैंड समझ आ गया, मुझे बॉटम ऑफ द बार समझ आ गया, मुझे एरिया समझ आ गया. और biggest use, I have still people getting lots of payouts in Apex. They go in, they put in their ATM, they said मुझे 4 पॉइंट चाहिए और नहीं चाहिए, 4 पॉइंट ले लें, यानी कि दिन की बात कर, दिन के उन्होंने 1 पॉइंट लिया मिड बैंड से, 2 पॉइंट ले लिए S2 से, R1 से, एक्सपेक्टेड हाई से, जिस तरह अभी मैंने एपेक्स में भी कर रहा हूँ. प्राइस हाई, मैं एपेक्स का लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड में हूँ, R2 पे प्राइस हाई,
मैं एंटर किया 680 से, ये नंबर था जो, सॉरी 580 या क्या नंबर लिखा हुआ है, आई नो फॉरगॉट द नंबर, 580 नहीं, so I entered at 580, I did a short 5 MNQ, ठीक है, बैठा रहा, एपेक्स के लाइव ट्रेलिंग में हूं, एरिया ट्रेड है, अपना स्टॉप लॉस कहां लगाया, इससे 35 पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि अगर प्राइस चढ़ती चली जाए तो ये तो ना होना कि मेरा पूरा अकाउंट ही खाली हो जाए, तो इसके ऊपर मैंने लगाया, प्राइस गई 600 तक, यहां गई 600 तक, पहले मैंने देखा 5 10 माइनस $200, ठीक है, मैंने 200 माइनस देखा, वहां 600 वो शूट करके गई ऑलमोस्ट 575 तक, ऑल द वे वहां से, तो I think I took $190 plus and I closed my trades and I got up, right? So area trade में आ जाती है price generally, like today unfortunately because Nasdaq was not in R1 but ES was, and it just broke through, but R2 worked to the dot. If you look at ES R2, नहीं इस पे भी ES पे देखिए सर, ES पे R2 आपका एक दफा बता दूं आपको, ट्रेडिंग नहीं आती, पर्डिया गया ना, आप इस लैपटॉप को भेज देंगे, मैं आपको, क्योंकि आपके क्या सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि मिड बैंड वाले, बॉटम ऑफ द बार वाले, सो यू नो अगेन प्रैक्टिस प्लीज, हाँ, फिर आपका होप चली जाती है कि इट मींस इट्स, हालांकि बढ़िया फुल प्राइस में नहीं जा रहा, 3000 की जगह आपके $750 है, पर मैं नहीं रेकमेंड करता बिगिनर्स के लिए पर्डिया एट ऑल। हम मास्टर करें कि आपके 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5, वो बुलनॉक्स में कर रहे हैं, लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड में उन्होंने ये पास किया है, राइट, अंदर आते हैं एटीएम के साथ करते हैं, राइट, कि मैंने इतना पॉइंट लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, और जो लाइव ट्रेलिंग पास कर जाता है वो, ये तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिला हुआ है कि ईए में एंड ऑफ डे है, थोड़ा सिर्फ 2 कंपनीज में टेक प्रॉफिट में, there are 2 more companies I never even talk about, they have a more difficult, what they, you know, they say, अगर आपने का 1500 है, दिन में 500 लूज किया, आपका अकाउंट चला जाएगा। अब इमेजिन करें, इतनी भी टफ कंपनी है, वो तो हम लिस्ट नहीं करते, ये कंपनी का नाम है टॉप स्टेप, अच्छी बड़ी कंपनी है, लेकिन 1500 देंगे आपको और कहेंगे 500 लूज किया ना एक दिन में तो आपको अकाउंट गया। अब वो इतनी है, नहीं सर, मैं आपको उसकी लीजन, आपके पास $1 मिलियन का अकाउंट है, एक मैं एग्जांपल दे, वो कहते हैं कि अगर आप 30% अपने कैपिटल का लूज कर दिया तो यूर नॉट अ ट्रेडर यार, मीनिंग के इसका मतलब है कि आपको बस 100,000 दिया और आपने $30,000 लॉस कर दिया यार, आप 500 देख रहे हैं, वो परसेंटेज पे देखते हैं, सो द वर्ड every single trading is done with a percentage, not by a dollar amount, because what they want to see is if a person has $1,500 and they manage to blow up 30% of their capital, that means they still have an issue. So right now क्या करती हैं, ये सारी कंपनियां कहती हैं आपको 100% दे रहे हैं हम, फिर अकाउंट बंद करेंगे, 1500 का 1500 ही लूज करेंगे ना, तो अकाउंट बंद होगा। आप अपने अकाउंट में $1500 जमा कराएं एपेक्स में, एपेक्स छोड़ें, पर्डिया छोड़ें, मुझे सिर्फ आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स यही रही तो आपके 1500 ही रोज जाएंगे ना। आप जाएं सीएबीसी जाएं, $1500 लें, जीएफएफ में भेजें, सिर्फ देखें आप ट्रेड कैसे करते हैं और मैं देखता हूं कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, आपकी फीलिंग बदल जाएगी, क्योंकि वहां पर आप होता है यार $33 है ना यार, $15 है, तो मैं पूरा 750 माइनस देख लिया, वहां से चले गए। अपने 1500 को कैसे ट्रीट करेंगे, आई डोंट नो हाउ आई ट्रीट एवरी सिंगल, जब पीए कभी गया ना 4 दिन तक पेन होती रहती है कि यार मैंने पीए लूज कर दिया, इतना क्लोज था। So all they care about is to teach you, are you a good risk management होती है ना, रिस्क आप कितना ले सकते हो, कितना है। अब मैंने R1 लगाया, मैंने अपना स्टॉप लॉस 70 पे लगा दिया, अगर मैं नहीं गुड ट्रेडर तो क्यों लगाऊं, वो आई गई, प्राइस नीचे आ गई थी काफी बाय द वे, लेकिन वो 70 से 90 पे चली जाती, मेरा तो अकाउंट खाली हो गया था। मैंने छोटा
हाँ जी, तो ये अपने स्टॉप लॉस कितने पे लगा? ये तो 1500 वाला अकाउंट नहीं वो आपको वो तो नहीं, वो ये नहीं केयर करते, आप पूरा 1500 जाया कर दो। लेकिन स्टॉप लॉस कितने पे लगा? सर आपका स्टॉप लॉस की मैंने उस दिन बताया है कि लेस से मिड बैंड का ट्रेड है तो आप 4.20 टिक्स मैक्सिमम है यार, 20 टिक्स मैक्सिमम। मिनिमम तो है नहीं है ना, क्योंकि उसको मैं किस लिए पूछ रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि जो रेटिंग होती है ना इसकी, उसकी वजह से, या ये कि एटलीस्ट नीचे से इतना तक आ गया, जैसे आपने बोला 8.5 तक वेट कर, हाँ एग्जैक्टली 8.5 तक ज्यादा हो जाता है। नहीं नहीं 8, लेकिन 20 टिक्स को नहीं क्रॉस करेगा। मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो है 34 टिक्स का, नहीं 34 टिक्स। 34 टिक्स कितना बनता है? 35 कर लेना, गिव मी सेकंड। 34 डिवाइडेड बाय 4, 8.5. This is the maximum stop loss of the 30-20 SRES trade. So अब मैं आपको 20 का मैक्सिमम इज 34 टिक्स, राइट? 34 टिक नहीं, जो हमारा जो सबसे लंबा स्टॉप लॉस है ना, एक देखें मिड बैंड के स्टॉप लॉस आता है 5 का, टॉप ऑफ द बार का स्टॉप लॉस आता है 3.5 का। मैं आपको सारे लिख देता हूं ना, ताकि आपको पता हो कि मेरा स्टॉप लॉस ऑप्टिमल कहाँ है। सर एक चीज जैसे आपने लोअर हाई और हायर लो आया, उसके बाद आपने 4.5 जाने की बात करो, 4.5 पे आपने ट्रेड लगा दी। अब आपने उसे ट्रेड पकड़ी और वहीं के वहीं जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए मिड बैंड का ट्रेड है, हायर हाई प्राइस लगी हुई है, आपका ग्रीन बैकग्राउंड है, यहां पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, आपकी एंट्री यहां पर आप बैठे हैं, ठीक है। अब एक नंबर है 5600, ये हायर हाई का नंबर है। मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां से लेकर आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 8.5 का नेगेटिव होगा इस पॉइंट से। सो वेयर 56, so 5600 minus 8.5 is your 559150 is your stop loss. अब ये जो प्राइस है, ये क्या पता यहां से 5 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट। सो फ्रॉम हायर हाई to 8.5 is your stop loss. This is a mid band trade का norm है, क्योंकि क्या आपने वो 8.8 पे लगा दी, 7 पे लगा दी, 6 पे लगा दी, उसने स्टॉप लॉस टच किया, वापस ऊपर चली गई, राइट? सो दिस इज दी so this works out to around maximum 5. So we must have to take risk up to the 8.5, or we should take. No, this is the maximum, because what happens is some people put 10. वो कई दफा वो क्या करती है 8.6 से वापस ऊपर चली जाएगी, राइट? ये तो फिर आपका मैथ ना हुआ ना कि कहाँ लगाएंगे स्टॉप लॉस, एक कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस लगाना है। सो मिड बैंड का रूल है हायर हाई minus 8.5, lower low plus 8.5. That's your optimal stop loss. If the price is coming from a lower low, you take a mid band trade right here. You're hoping the price will go down. So your stop loss is plus 8.5 from this point. Lower low plus 8.5, higher high plus. Now I have a standard rule. My standard rule is, today is the area. Area is 5603, 5600. This is my area. I don't care expected high. I just look, all right, I don't know, computer price could bounce from here to here to here. I don't know. So I take this number and then I will add 5 points maximum my exposure. Because if I enter here, I have to give it 8 points. If I enter at this, I have, so 5 points is maximum. You should stay in an area trade against you. If it goes to expected high, but if it crosses, because I've seen expected high break and I've seen extreme low break. At what point will you get out of a trade?
at what point will you say enough is enough, right? So area trade, if I was to point out, you should do area trade maximum 20 ticks or 5 points. That's the area. Today we took two area trades. One worked, one didn't work, right? But if I had taken R2 again, that would have been a profitable trade. एक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं सर आती है, लेकिन वो अगर वो सपोर्ट ना अच्छी हुई और रेजिस्टेंस ना अच्छी हुई तो हाँ वो पेनिट्रेट हो जाता है. अभी नैस्डैक 4 दफा आई है R1 में, 4 दफा आई है और फिर उसने 5वीं दफा R2 में आई और एक्सपेक्टेड हाई से निकल गई R2 की तरफ से. I know it seems like disappointed. Just will tell you, hey, I'm going in with 2 points, 3 points. आपने बुलनॉक्स कर ही लिया, उन्होंने भी कर लिया. ऐसे नहीं है. हाँ. डिसिप्लिन क्या बात है सारी. ठीक है, आप एटलीस्ट 5-6 को एटलीस्ट 2 हफ्ते हो गए. ठीक है, मैं आपका SRES करवा रहा हूँ जहां मुझे फील हो कि ट्रेड सही जा रहा है, लेकिन आप मिड बैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं अलोंग द वे? नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, फिर SRES ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस ट्रेड की. मिड बैंड की जो ट्रेड होती है कौन सी वाली ज्यादा? सर मैंने आपको ये बताया हुआ है, SRES के बाद जो मिड बैंड आते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो कंफर्म हो गया ना मेरा सेटअप कि यार मैं नीचे आ गया हूं मेरा, लेकिन ट्रेंड आपके दोनों सेम हो, प्राइस लोअर लो से आए या हायर हाई से आए. और वो पीछे भाई बैठे हैं, सिर्फ एक ट्रेड डालते हैं फिबोनाची वाला और 1 पॉइंट लेके बाहर आ जाते हैं. हाँ हाँ नहीं, अगर डायरेक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन वो मैक्सिमम आपका कितना नुकसान होगा. आपने 4 टिक्स इधर लगाए हैं, 8 इधर, तो या तो ये हिट होगा ना या ये होगा. लेकिन अगर प्राइस गई 3 टिक तक तो ये 3 टिक भी साथ शामिल हो जाएंगे. ये इसको हम लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड कहते हैं कि आपने 4 लगाए, वो 3 से वापस आ गया तो उसने 8 + 3 11 का नुकसान दिया आपको. तो लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड में, लेकिन वो 4 टिक्स तो मिल जाते हैं यार, 4 टिक फिबोनाची में मिल जाते हैं. नहीं, ये एक ट्रेड करते हैं बॉक्सेस वाला, वो जो 30-20 में बॉक्स आता है ना. हाँ, तो ये क्या करते हैं, ग्रीन बॉक्स लेते हैं और रेड बॉक्स लेते हैं. ठीक है, अब यहां से आप सेल करें, यहां से बाय करें. वो ये कर रहे हैं कि मैं 8 टिक्स का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं और 4 टिक्स का प्रॉफिट, तो 1 पॉइंट लेके बाहर आ जाते हैं. स्कैल्पिंग, फाइनेस्ट स्कैल्पिंग कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट के, 1 पॉइंट. ना SRES देख रहे हैं, ना बैकग्राउंड देख रहे हैं, ना मिड बैंड देख रहे हैं, ना एरिया देख रहे हैं. फिबोनाची का बॉक्स रेड आता है, ग्रीन आता है, रेड आता है, वो तो हर स्विंग में आ जाता है, राइट. तो 1 पॉइंट लेते लेते आपके हो गया. सो अगेन ही हैज फिगर्ड आउट आई वांट टू टेक 1 पॉइंट. अब वो भाई पीछे बैठे हैं, वो डाउ को फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो इतनी ज्यादा चीजें हैं. तो आप प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज ट्राई करेंगे, कहीं कामयाब नहीं होंगे. एक मेथड पिक कर लें, एक मेथड पिक. और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, डैनियल सिर्फ 4 लेक्चर में एक मेथड देते हैं, मिड बैंड. यार सुबह आया, मेरा बैकग्राउंड रेड है, मैं सेल में रहूंगा, मेरा बैकग्राउंड ग्रीन में, मैं बाय में रहूंगा. मिड बैंड से ही चलते जाते हैं, फिर वो डिविएट हो जाता है. क्योंकि मेरे तो जॉब है, मैंने आपको सब सिखाना है कि यार बॉटम ऑफ द बार क्या होता है, टॉप ऑफ द बार. लेकिन स्टेटिस्टिकली मीन्स प्रोबेबिलिटी, the bottom of the bar and top of the bar has the least amount of stop loss, least 3.5 point. So 30-20. So pick 30-20 and practice it for 2 points set in ATM. So 30-20
ATM should be, let's say I want to take 2 points. I'm not caring about anything. So that's 8 ticks. What is my stop loss? TP is 8 ticks. Stop loss is 3.5. What is 3.5? 4, 4, 8, 4, 12 or 3, 15. 15 ticks. चलो 14 ठीक. Yes. 15 ticks SL. 30, 20. Background color is green. Red. The moment you keep selling at the top of the bar, and you will get your 2 points. So this is, in terms of stop loss, this trade has the lowest amount of risk. Why? कि अगर आपने यहां से सेल किया, ठीक है, 3.5 पॉइंट के बाद वो ब्लैक कैंडल बन जाएगी, आपको निकाल देगी. That's it. So 3.5 point is the maximum stop loss for this type of trade. So if you bought it at the bottom, so price is going up, these are my bars. Sorry. So I would place my buy limit here or here or here, bottom of the bar. You have to keep moving it up. Yes, हर बार ठीक है. तो लेकिन from here, from 3.5 minus is my stop loss. So go in with this trade, bottom of the bar, put in 8 ticks and 14 ticks. इससे नीचे मैंने नहीं देखा कि आप देखें मिड बैंड में भी 20 टिक्स करते हैं. सर रिकॉर्ड अगर जैसे 30-20 में going short. Yeah. You take Top of the bar. Yes. It goes to mid band. Yes. Sometimes that distance is 3.5. No, I know, but because that's a black candle, right? Yeah. So it's the black candle, it is not the mid band. it's not a mid band. So all I care about is from top of the bar, another I see a black candle, I'm getting out. Because remember, black candle will happen at 3.5. Yeah. So this is the lowest amount of stop loss in any of our trades. Maybe the Fibonacci trade, he's putting it 8. So what's a Fib trade? So let's go back here. So where would I place my order? Let's quickly see. I want to sell now. 30-20 is magenta. I want to sell now. So let's open 30-20. I want to sell. I see everything is going in. Let me set my ATM. Hey, no more profit 8 ticks. Stop loss 14 ticks. Done. Sell right here. Sell limit. That's it. That's all. So let's see what happens. In this trade, what is the maximum I can lose is 3.5 points. Because from here, it can start a black candle here, right? But if it picks it up and comes down, because this is your alternative to your mid-band trade. Because over there, your mind is doing so many more calculations. Your mind is saying, is my background same? 3.5 point. कि अगर यहाँ से black नहीं 3.5 14 ticks 14 ticks 8 ticks का 8 का TP तो नहीं pick हुआ, no problem. So literally to make the simplest trade, if I was to just say area trades, this is the most simplest, by the way. You have a price in the morning given to you, R1, S1, S2, S3, S4. Go there, place an order, forget about it. Or right now, this is I'm not watching 15-10. I'm not watching large triggers. I'm just looking at, hey, it's top of the bar. I would sell here, and that's it. So let's see if it picks up. अभी नहीं गया, अच्छा रह गया क्योंकि वो 15-10 कर रहा है ना मूवमेंट उसके अंदर. So when you're trying to do 15-10 mid band at here these days, because of volatility, your brain is saying, hey, I gotta watch large triggers. Is the price coming from low or low? So a lot more here. I just have, let's see what happens. Pick it up, man. नहीं सर, जो रूल है रूल क्यों चेंज करना? बिल्कुल एज पे रखना है, बिल्कुल एज पे रखना है जहां पर उसने पिक करना है. इसको और जूम इन कर लेते हैं. I will even remove these triggers line. There you go, मेरा ऑर्डर पक हो गया.
पिक हो गया यहाँ पर। अब मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 3.5 पॉइंट का, ठीक है, और ये मैं टॉप ऑफ द बार से मैंने लिया बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। 1 पॉइंट नजर सर देखें, बैठे बिठाए मुझे $62 तो मिल गए थे। ये आपके सामने ट्रेड डाला हुआ है $62.7 डन, आई एम डन। मेरे 2 पॉइंट मिल गए यार, मुझे पूरे दिन में ये 3-4 ट्रेड चाहिए। टॉप ऑफ द बार लाइव ट्रेड करके दे रहा हूँ यार। ये इसमें आपने देखें यहाँ आई प्राइस 3.5। अब अच्छा इस बार में दोबारा नहीं घुसना यार, इस बार में दोबारा नहीं घुसना। आप कहेंगे अगेन वहां से ट्रेड लगता हूँ, सही लगता है, राइट, इट्स ओके। मैं कोई मजाक नहीं किया। 2 पॉइंट लेने थे मुझे यही हंसी आ रही है, वही चीज नहीं आप। अच्छा अब यहाँ से आपके ख्याल से मैं यहाँ से बाय करूंगा? नहीं करूंगा ना। बैकग्राउंड क्या है, बेरिश लिखा हुआ है, मैं बाय पे क्यों जाऊं? नो अच्छा अब मैं आपको अगला ट्रेड फ्री का ही दे देता हूं। अगर ये रिजेक्शन विक हुई ना, मैं नीचे जाके बाय स्टॉप लगा रहा हूं। ये देखिएगा, आप कहते हो कि मैंने इसमें से तो पैसे कमा लिए, जल्दी बाहर आ गया, सेल स्टॉप। ये क्या है देखिए, अगर एक मैं तो सिर्फ 8 टिक बैठा था ना, कोई 12 टिक बैठा है, लेकिन अगर ये रिजेक्शन विक हुई तो मुझे 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। वेट कीजिए, 2 मैंने 8 टिक्स का एटीएम लगाया है ना। नहीं रिजेक्शन विक के बाद आपके 4 टिक्स तो रिजेक्शन विक के बाद नीचे लगाना चाहिए, नीचे, क्योंकि रिजेक्शन विक कहां कंफर्म हो गई? अगले बार पे विक के ऑपोजिट लगाऊंगा ना, क्योंकि इस बार में उसका था कि मैं ऊपर नहीं गया। देखें ये वाला ट्रेड मैंने 66 से 61 4 पॉइंट लिए, लेकिन मैंने 2 के बाद बाहर आ गया, ठीक है। 2 पॉइंट, हर बैकग्राउंड कलर चेंज हो 2 पॉइंट लेते रहे, 2 पॉइंट लेते रहे। तो अब आप देखिए ये पिक हुआ रिजेक्शन विक, और एक पॉइंट तो मिल ही गया, 4 तो उसने दिखाए थे। तो अगर आपकी जो जनरली ये वाला 4 टिक्स का ट्रेड होता है, लेकिन ये देखिए रिजेक्शन विक वाले में भी पैसे बनेंगे, $25 बने हुए हैं। लेट्स क्योंकि रिजेक्शन विक कहां पर थी? यहां थी ना, तो इसने मुझे दिखाया ओ 1 टिक से रह गया मैं, उसने मुझे उसने दिए 7 टिक्स, लेकिन जनरली ये 4 टिक का ट्रेड होता है। सो लेकिन रिजेक्शन विक यहां थी, 1 टिक, 2 टिक, 3 टिक, 4 टिक, 5 टिक, 6 टिक, 7 टिक, और मेरा टीपी देखे पड़ा हुआ था 8वें टिक पे। अगर 8 टिक होता तो $100 ये भी बन गए थे, 2 पॉइंट ये भी ले लिए ना। तो 1 पॉइंट ले लें रिजेक्शन विक में। बाय द वे, द बिगर द रिजेक्शन विक द फास्टर यू विल गो डाउन। अभी तक मैं स्ट्रेट से निकला नहीं हूं, लेकिन 60 टिक रिजेक्शन विक ने, छोटी सी रिजेक्शन विक ने, तो आपने अगर टॉप ऑफ द बार ले लिया और आपने कहा यार मैं जल्दी निकल गया हूं, मुझे चाहिए था कि ज्यादा पैसे ले लो, तो अगले वाले बार पे जाएं और वहां पर 1 टिक पे सेल स्टॉप लगा दे। हाँ अभी भी उस स्ट्राइप से नहीं निकला सर। देखिए ट्रेड सही हो ना तो आपके नुकसान नहीं होता। गैप ट्रेड भी किया है इसमें। ये बाय द वे ये टेक्निकली इसका वर्ड रिट्रेसमेंट डाइवर्जन गैप ट्रेड है, ये गैप ट्रेड कहलाता है। ये देखें कोई भी प्राइस ऊपर नहीं, हर बार में एक आदमी। अब देखिए सिर्फ 30-20 शो कर रहा हूं, कोई और नहीं शो कर रहा। 30-20 का चार्ट है, 2 आपके सामने ट्रेड पड़े हैं, तीसरा फिबोनाची वाला पकड़ लें, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खराब होगा क्योंकि अभी उसका तेज है। हाँ, और जनरली मेरा स्टॉप लॉस अगर होता तो मैं इसको यहां ले जाता, क्योंकि टॉप ऑफ द बार से 3.5 पॉइंट तक मैं ट्रेड के अंदर बैठ सकता हूं। लेकिन ये जो आपका एटीएम ये वाली होती है 4 टिक्स की होती है, कि चलती गाड़ी में मुझे 4 टिक्स मिल जाते हैं। पर बाद में बहुत तेज चल रहा होता है तो ऊपर से मार्केट से बाय कर, नहीं मार्केट तो कभी भी नहीं, या बाय आस्क या सेल आस्क, बाय बिड सेल बिड, नॉट मार्केट। मार्केट तो आपको पता नहीं क्या प्राइस देगी। आप सोच रहे हो आपने ऑर्डर यहाँ लगाया है, ऑर्डर लगेगा यहाँ, यस एग्जैक्टली, और यहाँ आके वो रिवर्स हो जाएगी। तो Buy ask में generally keep your cursor at a point and you say buy ask. yeah, it is as close to the market price, as close to the market price. It's moving very fast, right? Buy ask. No, it just Rather than buying it from here, it's better to buy it from here.
Sorry, sell it from here. लगाते हैं आप ऊपर हो जब तक आते Buy ask is like अच्छा ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा दिल करता है, अब आप देखिएगा मार्केट क्या करती है, मैं मार्केट दबाऊंगा ना सेल तो वो स्टार्ट ही माइनस से कर रही है, ठीक है। बाय आस्क क्या करती है, लिमिट ऑर्डर लगाती है, सेल आस्क लिमिट ऑर्डर एज क्लोज टू द मार्केट प्राइस, बट मार्केट प्राइस इज जस्ट अ मार्केट प्राइस। सो मार्केट कभी नहीं दबाता, अगर चलती गाड़ी में बैठना है तो बाय आस्क, बाय सेल, बाय बिड, सेल बिड। ये बिड चल रही है, मैं इसके साथ अपनी ज्वाइन कर देता हूँ बिड, so it's as close to a market price। so मार्केट तो सिर्फ नैस्डैक में दबती है, अगर आपके पास बाय आस्क में भी वो करते करते कई दफा लिमिट ऑर्डर लगाता है ना बाय आस्क में। अब अगेन मैंने इस यहां बैठ रहा है, मैं कौन सा ट्रेड लगाऊंगा, नजर आ रहा है, मैं सिर्फ टॉप ऑफ द बार यहां पर जाऊंगा, यहां पर जाके मैंने सेल दबा दिया, ये मेरा सेल ऑर्डर है जी, और मेरा एटीएम खुलेगी जब वो खुलेगी। सो 30-20 पकड़ें, ट्रेंड ग्रीन है बॉटम ऑफ द बार करें, ट्रेंड रेड है टॉप ऑफ द बार करें, सबसे आसान ट्रेड है। मिड बैंड भी मुश्किल मुझे लगा, ये देखिए ये खुला है अभी, एक सेकेंड लेट्स सी, मैंने 8 टिक्स लगाए हैं, दो ही चीजें होंगी ना, या यहां से टीपी जाएगा या एसएल जाएगा। यार 15-10 में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वहां एसएल देखें, एक पॉइंट मिल गया मुझे टॉप ऑफ द बार से, ये $50 37 मीन ऑलमोस्ट। अब यार मैं फिर मैं कहता हूं कि व्हाई डू आई मेक ट्रेडिंग लुक सो इजी, तो $50 अभी भी $1 एक बना हुआ, चले यार माइक्रो कर लें, क्योंकि 2 माइक्रो 3 माइक्रो। एक चीज ये भी सिम में मैंने किया तो 600 आराम से मैंने, क्योंकि आपकी फीलिंग सिम वाली डिफरेंट है, तो फिर आप वही ट्रेड होता है ये कि मॉर्निंग में आप सिम कर लेते हैं, 11 के बाद रियल डाला, वो सारे ट्रेड उल्टे हो गए, तो स्टार्ट भी तो वही करें ना प्रैक्टिस। अब यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या 3.5 पॉइंट का है ना, तो मैंने इसको इनफ टाइम देना है, इनफ ब्रीदिंग देनी है। 15-10 डाइवर्जेंस है कितनी स्ट्रांग रहती है, ये देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 3.5 पॉइंट। अब ये मिड बैंड का, अगर किसी ने मिड बैंड का ट्रेड, सो आई विल डू ए सेल आस्क बिकॉज आई मेरे मिड बैंड। अब मैं यहाँ पर बिड खोली है सेल आस्क की, क्योंकि मैं मिड बैंड के करीब हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है 3.5 पॉइंट। सो बट बैकग्राउंड कलर के ट्रेड तो लॉन्ग का जा रहा था, क्यों मैं लॉन्ग, कहाँ कौन कह रहा है लॉन्ग जा रहा है सर? नहीं छोड़ दें, नहीं तो मैं तो ऐसा ही है। तो देखें लोग कैंडल कलर कंफ्यूज कर देते हैं, लो जी प्राइस ऊपर चलने लगी है। मेरा बैकग्राउंड इस ट्रेड में मिड बैंड से मैंने 1 पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, मिड बैंड से सेल किया था ना, एज क्लोज टू द मिड बैंड से, तो ये 30-20 का मिड बैंड है, जा सके। लेकिन जब तक मेरा, अब मैं अगर ग्रीन होता है तो मैं बॉटम ऑफ द बार ट्रेड दिखा देता हूँ, वेट करें। ये सबसे अच्छे ट्रेड होते हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है बॉटम ऑफ द बार जाने दे। ओके जी, ट्रेंड चेंज हो गया, आई गोटा गेट आउट, नो प्रॉब्लम, आई विल गो एंड बाय हियर। ये मेरा बाय ऑर्डर लग गया, सो बाय ऑर्डर लग गया एट द बॉटम ऑफ द बार। हाँ जी 30-20, क्योंकि 15-10 पे भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। हाँ और ऊपर कर लेंगे, नहीं लॉक डाउन की तरफ नहीं होता, ऊपर की तरफ हो जाता है ये। हाँ नहीं मैं इसको डबल क्लिक करके अटैच टू नॉट प्राइस लाइन, इसको कहते हैं, मैं ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है कि इसको यहाँ लॉक कर दें। किस पे लॉक करेंगे? नहीं it's sometime it works, sometime it doesn't. Generally the idea is you lock it to the bottom of the bar automatically chasing. So I will go ahead. अब वो देखिए वो फिबोनाची वाला ट्रेड वाले आ गए, वो उन्होंने देखा फिबोनाची बॉक्स में आ गई, यहाँ से सेल आस्क करता हूँ, let's see if I get a point out of it. नहीं फिब से लिया ना, रेड बॉक्स से फिब से लिया है, 2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस, तो यहाँ मुझे 1 पॉइंट मिलना चाहिए। ये देखें ये फिब वाला ट्रेड था, देखें एक पॉइंट फिब का भी 1 पॉइंट आ गया। नहीं ये फिब ट्रेड था,
ये Fibonacci boxes है ना, तो ये फिब के ट्रेड में 1 पॉइंट ले लिया था। 1.25 आ गया। यस, ये वाला तो वो ये कर रहे हैं, वो बॉक्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये फिब का ट्रेड आपका आ गया कि 1 पॉइंट ही लेते हैं ना आप। ये बाय आस्क क्यों, मार्केट नहीं दबाता ना मैं, तो मैंने बाय आस्क किया, ये 1 पॉइंट ऑलमोस्ट एक्चुअली दिखा गया था पहले, तो ये मेरा 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 25 एनीवे। हाँ, लेकिन इफ आई वांट टू बाय अगेन आई गो राइट हियर एंड बाय लिमिट, buy limit, sell limit, buy, background color is green, keep buying, background color is red, keep selling। और इसको लॉक करेंगे तो कौन सी इंडिकेटर को लॉक? नहीं, इसका इंडिकेटर का नाम मेरा ख्याल है, you want to sorry, right click, attach to indicator, takes a little bit away, it says current price high, current high. No, that's wrong. So I have to double check. So bottom of the bar, I will do a buy limit. Attach to indicator proper. 30 minutes में नहीं आ रहा, 15-10 में आ रहा, 20-20 में नहीं आ रहा। ठीक है। Not value you have to. Let me double check. So bottom of the bar, because if you look at where is this placing my trade, look, it's placing somewhere 1510 that area. Because आपको नजर तो उस तरह आ जाएगा ना कि 1510 पे 3020 bottom of the bar is this trade. So some users will say, all right, let's do a mid band here. So that's your mid band trade. But here I will do a, yeah, let me move it around here because slightly above the if you wanted to take a bottom of the bar on 1510, your bottom of the bar of 1510 would be there. So let's see. So in terms of all the trades after area trade where you just use the price, you don't care about any charts, triggers, indicators, support and resistance, you take this is the next easiest trade. 30-20 bottom of the bar, green, 30 and 2 points are definitely there for you most of the time. Let's see. All right, I got picked up. There you go. 1 point मिल गया मुझे. 1 point मिल गया मुझे. 1 point पूरा नजर आया था $50 का. Let's see. $62, $75, $87, $100. अब आप ये बताएं यार, ये कहाँ मुश्किल है? अब मैं अगर ये रिजेक्शन विक तो थी नहीं, मैं इसके ऊपर जाके बैठ जाता हूँ. यहाँ जाके बाय स्टॉप कर देता हूँ कि यार अगर ऊपर गए तो साथ मुझे भी ले जाना. मुझे तो ये ब्रेकआउट ट्रेड बन गया आपका, क्योंकि पिछले का ब्रेकआउट है ना 1510 का, वो ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपका ब्रेकआउट भी हो गया, टॉप बॉटम ऑफ द बार भी हो गया. आप कहते हो नहीं यार अभी मिड बैंड पे नहीं आए, मैंने फिबोनाची बॉक्स ये लेने हैं, वेट करें, यहां जाके यहां बाय लिमिट लगा दें, ये भी लग गई. तो हर ट्रेड हर सेकंड बाद आ रहा है. ये बाय आस्क में जब आपको जैसे 1 पॉइंट मिलता है और आप चाहते हैं कि यहीं पे मैं बंद करूं, तो फिर सेल बिड बाय बिड कीजिएगा, क्लोज का बटन ना दबाइएगा. नहीं बिड जरा ज्यादा जल्दी होती है. देखिए इस ट्रेड में अभी तक मैं जिंदा हूं. अगर मैंने दो पॉइंट लिए थे ना मैंने आपके सामने, नो प्रॉब्लम. अब मैं कहता हूँ यार ओ माय गॉड बॉटम ऑफ द बार मिस हो गया, क्या करूंगा? बाय बिड लगा देता हूँ यहीं से. बाय मार्केट नहीं करूंगा, उसने लिमिट ऑर्डर लगाया है, उसने देखिए मेरा ऑर्डर पिक हो गया. ये चीज मुझे देखनी, क्योंकि आपने वो एरिया ट्रेड में ये काम हाँ, तो मैंने बाय देखे ना, यहाँ से भी अभी एक टिक दे रहा है. मैंने कहा यार मिस हो गया है, मैंने और ऊपर जाना है. 1 पॉइंट आपके सामने और निकल जाएगा. अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम.
So this is live experiment, live telling you how you take a bottom of the bar. नीचे आए 30-20 का पहला बॉटम ऑफ द बार आ गया ना, और वो आपको खींच के ले गया, वो आपका सारा ट्रेड फिनिश कर देता है ट्रेंड चेंज होते ही। और दूसरी साइड पे भी ट्रेंड रेड हुआ, टॉप ऑफ द बार सेल कर दें, और एक ही ट्रेड में आपका पूरे का पूरा दिन निकल जाता है। तो बाय बिड बाय आस्क, लेकिन फिर आपको उसमें फिर टीपी नहीं लगाओगे ना तभी तो। देखिए अकाउंट के डिपेंड करता है। अगर बुलनॉक्स है, एपेक्स है, अब तो लेजेंड के मास्टर पे भी लगाना पड़ेगा, और आपका है तो फिर गेम मिस हुई थी, मैं कहा यार चलो बाय बिड दबा देते हैं। लेकिन हमेशा आप देखेंगे मैं ये नहीं करूंगा कि ग्रीन में रेड दबा दिया और रेड में ग्रीन दबा दिया, क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी कम है ना। नहीं, अभी तो मैंने टीपी लगाया हुआ है। लेट्स से मैंने अभी क्लोज करना है, मैंने $62 बना लिए हैं, अब मैंने इसको क्लोज करना चाहता हूँ। मैं कहूंगा बाय हो ना, बाय, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेल आस्क, ये लिमिट लग गई, और वहां पर लिमिट ऑर्डर लग जाएगी। नहीं, देखिए बाय आस्क से बाय किया था, मैंने सेल करना है ना, तो मैं क्लोज नहीं ना दोबारा, मैं ये क्लोज नहीं दोबारा, नहीं भाई ये सारी एक ही चीज लाइन है, तो मैं यहाँ सेल आस्क लगा देता हूँ। ये डजंट मैटर, आप क्लोज कर सकते हैं, क्लोज बाय सेल, मीन बाय आस्क, ये सारे क्लोज वाले बटन हैं। देखें बाय मार्केट क्या कर रहा है, उसने मार्केट से खोला, ठीक है। मैं एटीएम बंद करता हूं, दोबारा इसको जूम इन करके देखा। अब मैं यहां से बाय करना चाहता हूं, मेरे पास एक ऑप्शन ये है, मैं बाय लिमिट लगाऊं, ये मेरा पहला ऑप्शन है, ठीक है। मैं कहता हूं नहीं जी, मैंने चलती गाड़ी में बैठना है, मैं बाय बिड कर देता हूं। उसने करंट प्राइस से एक टिक नीचे लगाया, ठीक है। मैं कहता हूं नहीं यार और तेज जाना है, बाय आस्क कर दो। वो करंट प्राइस से एक टिक के करीब आपको बाय आस्क ले लिया, लेकिन बाय ही करूंगा ना। और तीसरा होगा बाय मार्केट, ये तीसरा है। ये सारे बाय किए, अब मैंने इसको क्लोज करना है, तो या तो मैं क्लोज कर सकता हूं, मुझे जो भी ट्रेड मिला, या सेल आस्क, सेल बिड, सेल मार्केट, ये तीनों क्लोज कर देंगे। अगर मैं सेल मार्केट करूंगा फिर भी ट्रेड क्लोज होगा, बाय मार्केट सेल बिड करूंगा फिर भी ट्रेड क्लोज होगा, बाय बिड के बाद सेल मार्केट कर दूंगा फिर भी ट्रेड क्लोज होगा। तो 3 वे हैं, 4 वे, बाय आस्क, बाय बिड, बाय मार्केट एंड बाय लिमिट। तो अब मैं कहता हूं यार बार के इधर है, चलो जी बाय बिड दबा दिया। हमेशा आप ग्रीन बैकग्राउंड में मुझे बाय ही दबाते नजर आओगे, मैं सेल नहीं दबाऊंगा, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों जाऊं। तो दिस इज योर बॉटम ऑफ द बार। अब यहां बॉटम आएगी, अब यहां फिबोनाची बॉक्स एकदम बनेंगे, वेट कीजिएगा, उनका ट्रेड आने वाला है। 30-20 में फिब बॉक्स का आपको बता देता हूं। चले आप गए यार मैं 15-10 देखना भी नहीं, सारा काम 30-20 पे कर रहा हूं ना। बॉटम ऑफ द बार 30-20 कर रहा हूं, मिड बैंड, ये देखिए बॉक्स आ गए, यहां पर गए, बाय लिमिट लगा दिया। यही है ना सर आपका ट्रेड। बॉटम ऑफ द ग्रीन बॉक्स 8 टिक्स का स्टॉप लॉस, 4 टिक्स का प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले मिड बैंड ही चल गया है। ये क्या मैं यहां लगा दिया ना कस्टम, तो ये बना 8 स्टॉप लॉस 8 का। एक्चुअली 2.30-20 में दे जाता है, लेकिन चलो 4 लगा दे, और यहां जाके मैंने बाय लिमिट कर दी। 4 टिक्स कि अगर प्राइस इधर आएगी फिबोनाची के अंदर, तो मुझे जाते जाते दे दो। अब एक और यहीं से ट्रेड लगाऊं, देखें इसको मैं करता हूं ओसीओ, ताकि हर चीज, अब आपके सामने 6 ट्रेड लगा देता हूं एक ही तरह के। मेरी एक पॉसिबिलिटी है, मैं यहां गया, राइट क्लिक, ओसीओ कर दिया, ताकि मैं मल्टीपल ट्रेड लगा सकूं। एक ट्रेड लगाया कि यार अगर इसको ब्रेकआउट कर गई तो मुझे यहां से उठा लें, ये ब्रेकआउट ट्रेड है। अगर फिबोनाची के इधर आ गई तो यहां से मुझे बाय कर लें, ठीक है। ये 2 ट्रेड इकट्ठे लग गए, या एक पिक होगा या दूसरा पिक होगा, जो पिक हुआ वहां चल। तो मैं यहां अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहा, अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो मैं ब्रेकआउट उठाऊंगा। लेकिन ये एडवांस ट्रेडिंग है, मीनिंग के आप 4 ट्रेड इकट्ठे लगा रहे हो, जो आ गया आपके हाथ आ गया। ओसीओ, हाँ जी, राइट क्लिक किया, ओसीओ ऑर्डर लगाया। अब मैंने क्या किया, यहां से मुझे बाय स्टॉप लगाया,
meaning I want to go up, take me with you. Okay. But I want to go inside the Fibonacci. So these are the Fibonacci. I would like to trade from the bottom of the Fib retracement, 1 point. ये देखिए, अब वो ब्रेकआउट वाला पहले पिक हो सकता है क्योंकि ऊपर जा रही है ना. आपको यार फिबोनाची तो आया नहीं, दूसरा मिस हो गया. So you are cycling through 4 or 5 mid-band, Fibonacci, breakout, SRES, ये सारों के अंदर आपका लेकिन एक ट्रेड पिक करना है 30-20 ग्रीन बॉटम ऑफ द बार, 30-20 रेड टॉप ऑफ द बार, सेल. और पहला ही स्विंग आपकी एटलीस्ट 80-85%. चले आज पीछे जाके देखते हैं ना क्या हुआ. जब जब ट्रेंड चेंज हुआ हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली, best way to do it is do a back testing. So let me load 5,000 bars. I want to see what happened from every time a trend changes, how many opportunities I get. All right, it is gone into 5,000 bars. I'll close these trades, but let's analyze. जहां rejection wick आई वो तो 100% है. So let me go back 2 o'clock, 4 o'clock in the morning. Today is बिल्कुल देखिए 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. ये 649. ये देखें ट्रेंड चेंज हुआ. यहाँ तो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी तक तो ये बैकग्राउंड कलर नहीं है. ये देखें ये सुबह 8:30 बजे था, आपने यहाँ बाय किया. ऑनेस्ट टू गॉड यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा दिन खत्म हो गया क्योंकि ये 20 टिक्स है, ये इतनी बड़ी है. So you are doing bottom of the bar on every bar. ये देखें ये ट्रेंड चेंज हुआ ग्रीन, ये मेरा बॉटम ऑफ द बार ट्रेड लग गया. ये सुबह कितने बजे लगा? 8:50 पे. So, but you can do it anytime it turns green up. यस यस. ये देखें ये एक और लगा. बट चांसेस आर के बहुत ज्यादा ओवर बॉट हो जाए ना ये नीचे स्ट्रेंथ, तो फिर आप उसको इग्नोर करें क्योंकि वो फिर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा ना. ये देखिएगा आपने यहाँ फिर बॉटम ऑफ द बार लिया, स्टॉप लॉस हिट होगा. लेट्स सी इन रेड, डू वी हैव ए रेड गोइंग डाउन? नथिंग. आई डोंट नो इफ एनीथिंग केम, बट हियर इट वुड हैव टेकन योर स्टॉप लॉस 3.5 पॉइंट का. Green, but here you're good here. You know, every time Daniel says in the lecture, we will never, ever, ever miss those type of trades. Never, ever, ever miss. That's every time the color changes, bottom of the bar पे लगा के बैठ जाए. आपको मिलते रहते हैं जी काफी. यहाँ देखें, यहाँ 2 बार पे बैक टू बैक, एक आया आपने अगले बार पे फिर बिठाए, 2 मिले आपको इधर ट्रेड. इधर तो आपको नेक्स्ट बार पे दिखेगा ना कि नहीं उस बार पे तो आपको पूरा मिला ना. उस बार पे तो पूरा मिला तो आपने वो खत्म कर दिया और अगले बार पे फिर बैठ गए. तो मतलब यू वर जस्ट ट्रेलिंग बिहाइंड. यस. जब आप उस पे आए तो उसने आपको 2 पॉइंट दिए. ओके, ये जस्ट सी ये बॉटम ऑफ द बार है ना सारा. देखिए मैं आपको दोबारा लगाता हूँ. अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? रेड का. ठीक है, अब यहां से मुझे चांसेस हैं, मैं यहां सेल आस्क करता हूं. 1 सेकेंड, सेल आस्क किया, सेल बिड ही कर देते हैं. सो बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन विक ऑन द टॉप आई हैड अ फीलिंग इट्स गोइंग टू गो डाउन. मीनिंग लाइक सिर्फ वो देखें $50 वहां से ले लिए, हालांकि बैकग्राउंड ग्रीन है और मैंने सेल डाला हुआ है. क्यों? वो रिजेक्शन विक आई थी. तो रिजेक्शन विक देखते ही आपके $75 बन गए, 67. So you can pick up बार के अंदर आपको नजर आ जाता है कि मैंने कौन सा ट्रेड लेना है. बाय एंड सेल, बाय एंड सेल. ये कि ये फिब तक बैठूंगा सर. ये देखें 112, 137, एक रिजेक्शन विक नजर आ गई. अब सेल डाल दो यार कि ये तो रिजेक्शन विक है. देखिए मैं लाइव आपके सामने अगर कभी हो, अपना लाइव भी अकाउंट दिखा दूंगा ना. हाँ, गॉड अप बट इट गॉट रिजेक्टेड. यस, सो दैट मींस नेक्स्ट बार पे आप बैठे तो $112, राइट? तो वहीं पे आप सेल लास्ट कर देंगे. ये अगर दिख गया. और मैंने कहा निकल, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ निकल जाना है. वेट, मैं यहाँ निकल रहा हूँ.
आपको दिख नहीं रहा है। ये नेक्स्ट बार तो बाद में बनेगी ना, बट वो जो ऊपर विक उसी वक्त दिखने लगे। हाँ, अगले बार पे। राइट देयर एंड So as soon as you see the wick, Yes. sell last, right? नहीं, अगले बॉर्डर में बाइस अपने करना है। Oh, sorry, अगले पे buy at the bottom. यस, यहाँ पर, यहाँ से अब यहाँ से सेल करेंगे। देखिए मैंने वो फिबोनाची तक बैठा हुआ हूँ क्योंकि वहां से रिट्रेस आ गई। अब आप देखिएगा मैं यहाँ तो उसके थोड़ा सा नीचे से आप करोगे सेल, राइट? उससे नीचे होएगा अगले बार से नहीं, मैं बाय लिमिट लगाया हुआ है ना। नहीं, अभी नहीं ट्रेड लिया, अभी तो मैं सेल में हूं ना। वो रिजेक्शन विक वाला ट्रेड आता जा रहा है ना, अभी खरीदना है ना। नीचे बाय लिमिट लगाया हुआ है, वो देखें बाय लिमिट लगी हुई है मेरी। आई नो, लेकिन मैं उनको ये कह रहा था कि मैंने यहाँ तक बैठना है सिर्फ ट्रेड में, क्योंकि नहीं, अभी नहीं, मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ सेल करना है, ये टॉप ऑफ द बार है, यहाँ आपने सेल करना है। बैकग्राउंड क्या है मेरा? मैजेंटा, तो मैं सेल करूंगा ना। सेल कहां से करूंगा? टॉप ऑफ द बार से, ठीक है। अब ये पिक करके दो ऑप्शन है, नहीं, मिस नहीं। अगर यहाँ रिजेक्शन विक हुई, फिर मैं बॉटम ऑफ द बार से सेल स्टॉप लगाऊंगा, तो 2 in 1 ट्रेड बन रहे हैं। तो ये देखें, यहां में आया, ये ट्रेड लगा हुआ है ना, यहां नीचे जाके मैं करूंगा सेल स्टॉप। अब मैंने आपको दोनों साइडें कवर कर ली हैं। एक बार है ना, मैं ऊपर से लगा दिया कि अगर यार ये यहां तक गई तो मुझे निकाल लो, मुझे ट्रेड में ले जाओ, मैं टॉप ऑफ द बार हूं। लेकिन अगर तुम नीचे ही जाते गए, मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया, मुझे साथ ले जाओ यार, राइट? तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। Okay, once we see the rejection wick, नेक्स्ट बार पे, नेक्स्ट बार at the top or at the बॉटम, जिस साइड पे रिजेक्शन है उसके ऑपोजिट, next bar at the bottom, yes, I'll enter. sell stop. Sell stop. It's not a sell limit, it's a sell stop, because you are selling below the white line. Look, this is the white line right now, right? If everybody gets to see it, this is the white line right now, right? व्हाइट लाइन ये चल रही है ना, तो मैं ऊपर क्या लगाया हुआ है? सेल लिमिट, क्योंकि व्हाइट लाइन से ऊपर है ना। तो डे 1 मैंने आपको सारा बताया था कि व्हाइट लाइन के ऊपर वो फिब के अंदर से ही गया जी पूरा। अब वो फिब के अंदर से 2 टिक रह गए, but it's okay. So I am now prepared. Now, technically speaking, I may hit a stop loss. पता क्यों? प्राइस हायर हाई हायर लो से आ रही है, तो मुझे ये ब्लैक कैंडल टू अपसाइड दे सकती है अगर, क्योंकि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यहां से मुझे लोअर हाई मिलना चाहिए। एवरीबडी फॉलो कि मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, अभी दो क्या चीजें हैं, हायर 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 लो। हमारा एसआरई का सेटअप नहीं बना ना, तो इन मीन्स के पॉसिबिलिटी है कि मेरा स्टॉप लॉस बच जाए, लोअर हाई बने और फिर नीचे आए। प्रोबेबिलिटी है ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है जब आप हायर हाई चलना शुरू हो जाओ और आप बॉटम ऑफ द बार से ले लें। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक रिस्क है, मैं आपको रिस्क यहां बताता हूं क्या रिस्क है। यहां हायर हाई है, यहां हायर लो है, ठीक है। अब अगर ब्लैक कैंडल आ सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और वो यहां जाके बनाएगी लोअर हाई, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको ब्रेक करें और यहां बनाए हायर हाई, ठीक है। अगर ये लोअर हाई के बाद जो बार आते हैं ना रेड, वो ज्यादा पावरफुल है, मैं ये कह रहा हूं। एसआरईएस के बाद जो सेटअप बनेगा ना, वो ज्यादा आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी वो देखे, अब पॉसिबल है कि मुझे टॉप ऑफ द बार से, उसने नीचे वाला ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि ओसीओ ऑर्डर था। अब मैं यहां पर बैठा हूं 3.5 पॉइंट तक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दिस टॉप ऑफ द बार।
probability is not that strong, but I can still take a risk. एक सेकंड, क्योंकि ये हायर हाई है, ये हायर लो है, यहां पर पहले लोअर हाई आए, नीचे की तरफ स्विंग शुरू हो जाए तो मेरे बार्स के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये देखे ना, ये स्विंग चल रही है, ये रिट्रेस चल रही है, स्विंग रिट्रेस, एक्सटेंशन बनने की कोशिश हो रही है. एवरीबॉडी इज फॉलोइंग? सो आई सेट लोअर हाई और हायर हाई. अच्छी, अभी तक तो मुझे 3.5 पॉइंट मुझे पता है, 100 अभी तक नहीं सेट हुआ, 8.5 तक जाना है इसका. तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ पर सेल, ये मेरा स्टॉप लॉस है, सेल किया हुआ है. अभी तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, क्योंकि 3.5 पॉइंट का था, याद रखें. अब SRES कंफर्म हो गई है, ठीक है. अब और नीचे की तरफ बाहर आएंगे ना रेड, नहीं अगर बैठे रहो. हाँ, विदाउट ब्लैक कैंडल हुई है ना, नहीं लेकिन देखिए, क्योंकि मेरा 3.5 पॉइंट, इसलिए मैंने कहा ना, सिर्फ 2 टिक से रह गया मेरा स्टॉप लॉस. ये देख रहे हो, LH आ गया. यस, ये मेरा पूरा SRES पूरा कंप्लीट हो रहा है. ब्लू ब्लैक, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई. अब इसमें अगर बैठे रहो, कंटिन्यूज गोइंग डाउन. So it necessarily doesn't have to make a black candle there. No, it's not necessary. It has to make this then lower high. नाम दिया हुआ है. अब वो नीचे अगर आती है and continues with it, shorter the distance, larger the extension. Just hope it doesn't come back up. This thing हो जाएगा. If this continues, it's a long. Okay, so if you are in 1320 right now and you can see this coming down, Yeah. from where do you pick up the trade to enter? Is there an entry point here? Right here. So go Right to here, top of the bar. It did not hit the stop loss. It's continuing down. It came down, showed him some money, now it's gone back up. So when it's showing you money, take it. If you don't put this trade to lower high, say 8.5. आई थिंक मुझे लोएस्ट दिखाया था उसने $200, 200. हाँ, तो यहाँ से 8.5 माइनस करो, वहां से ऑर्डर प्लेस कर दो. अब ये मसला है लाइव ट्रेडिंग, एपेक्स में, बुलनॉक्स में, लेजेंड्स में, कि मुझे 200 दिखाया, मैंने बंद नहीं किया, राइट. मैंने ग्रीड की ना यार, 200 से 300 हो जाएगा. अब वो जब मैं ट्रेड बंद करूंगा ना, वहां से 300 काट लेंगे आपको, कि यार मैंने तो सिर्फ 110 पे बंद किया है माइनस, और उधर कट गया 300. तो उन्होंने आपको कहा भाई आपने एक टाइम पे $212 देख लिए थे. So that's why you have to go inside a trade with a, hey, I want to take 4 ticks or 8 ticks or 12 ticks, or so now if I close, so 212 का वो profit वो भी नुकसान, और साथ ये तो, because what the psychology is, why they want you to do this. आप कहते हो यार मैं वापस 212 पे अब बंद करूंगा, ठीक है, और आपका ट्रेड खुला रहता है और वो नेगेटिव होता रहता है, और उनकी फंडेड फेल हो जाता है, और उनको आपको पैसे नहीं देने पड़ते, राइट. तो आपने क्योंकि खोला ही नहीं ट्रेड किसी एटीएम के साथ, उसने 212 दिखाए, तो आप साइकोलॉजी में ये बैठे हो यार, एक दफा 212 आ जाए ना तो मेरा थ्रेशोल्ड खराब नहीं होगा, राइट. तो आप इसी होप से बैठे हुए हो, और वहीं उसको उन्होंने आपको पकड़ लिया उसी चीज को. These guys are, तो एपेक्स भी ये करता है, बुलनॉक्स भी, लेजेंड्स भी, नाउ स्टार्टिंग टुडे, एंड योर डे ट्रेडर्स भी लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड. हाँ, सारे सारे. Every company says, tell us how many ticks you're planning to take. There you go. Now 212, अगर stop plus 137. अब लो जी, आपका अकाउंट और देल और $33 दूर जाते नजर जा रहे हैं. अगर आपका जैसे रिलेजेंस, अगर आपका पीए लिक्विडेट हो जाता है फॉर एग्जांपल, then you start back from here. Yes, correct. Take profit performance. Take profit भी PA में, PA में, yes. This is an it's supreme unknowing, but the idea of the every funded company idea is to learn how to put in your entries.
बिकॉज सिम विल नॉट गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप कहोगे यार सिम में तो कुछ बनता ही नहीं है सर। फिर आप जाएं CIBC, RBC, TD, GFF को 1500 से अकाउंट खोलेंगे ना। So means ultimately we should go in by putting your own money. That's Not until you guys can prove yourself you can make some money or you know how to enter. वरना एक दफा 1500 भेजेंगे फिर इस क्लास में नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, होता ये क्योंकि यही तो चीज खत्म करने के लिए फंडेड लगाई है कि आपको एंट्री आ नहीं रही। बाय द वे आप पूछोगे मैं ट्रेड में क्यों बैठा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी सेटअप को पूरा देखना चाहता था कि कहाँ तक जाएगी। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हर मिड बैंड के ऊपर, वो 30-20 के बॉटम ऑफ द बार पे आ जाएं। आपके सामने यार चला रहा हूँ $137 की, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था स्विंग, रिट्रेस, एक्सटेंशन, लोअर हाई, ब्लैक कैंडल बनेगी, शूट टू द डाउन साइड शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मेरा थ्रेशोल्ड खराब नहीं होगा, याद रखिएगा, मैं वापस उसी पॉइंट पे आ गया हूँ। तो राइट, कोई सी भी ट्रेड आप हाँ, तो 30-20 चार्ट देखें या 15 डिपेंड करता है। मैं 30-20 रेकमेंड ज्यादा करता हूँ। आप देखें एक्सटेंशन शुरू, आपकी नई ब्लैक कैंडल अभी एक और आ जाएगी। ट्रेड आपका सही डायरेक्शन में लगे, सही। अब मैं आपको इसको करता हूं क्लोज, ठीक है, ये हो गया ट्रेड क्लोज, एक्सटेंशन कंफर्म हो रही है, मैं टॉप ऑफ द बार चला गया, सेल शुड डाल, सेल ही करूंगा, यहां से बाय तो नहीं करूंगा ना। अब आपने देखा है मैंने क्या किया है, स्विंग, रिट्रेस, एक्सटेंशन, टॉप ऑफ द बार, SRES कंफर्म हो जाए, टॉप एंड बॉटम से शुरू कर दें अपना ट्रेड। और अगर आप देखें 15-10 पे ये समवट मिड बैंड के करीब लगना शुरू हो जाएगा, सेल ही होगा, बाय नहीं होगा। So I would like to sell in red, buy in green, sell in red, and this is a perfect example. You have a swing, you have a retrace, you have no extension, this becomes your swing. वो देखें अभी वो, अगर वो उसी ट्रेड में होता कितनी स्पीड से नीचे आया, और ये SRES का सेटअप आपको 1, 2, 3, 4, 5 टिक्स दे गया अभी तक, और अभी नीचे ही जा रहा है। So I will put my sell order and there you go, this is my entry. फिर आपके 15-10 के मिड बैंड भी बच, देखें कहाँ ऑर्डर लगा है, ये मिड बैंड से ऊपर लगा है ये, राइट। सो 15 swing, retrace, extension, no extension, swing, retrace, extension, मेरे lower low, top of the bar I'm selling, top of the bar I'm selling. No, bro. Practice this, please. Anytime SRES in 30-20 pass, no problem. Confirm हो जाए, उसके बाद बॉटम ऑफ द बार से आपके वही मिड बैंड ही है, मिड बैंड बाय और सेल। जैसे कंफर्म हो जाए, मतलब LH आ जाए या फिर HL आ जाए। सर आप ये कह रहे हैं कि SRE के बाद करेंगे। सर देखें वो चला गया ना, वो SRE का सेटअप कितना पावरफुल था, 1, 2, अब ये चलती कैंडल में से नहीं मैं बैठा, राइट, उसने ब्लैक कैंडल बनाई और वो नीचे ले गया मुझे। इतना 30-20 का SRE सेटअप कहाँ पर आया था, अबव नियर एक्सपेक्टेड हाई की तरफ, नहीं R2 पे आया, नहीं R2 के करीब आया। हाँ जी, ठीक है यार, हो जाएगा। डर ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡਾਊ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ यार। फिर आज ना ट्रेड करो, कोई गल नहीं, कोई। अब देखिए मेरा ये सेटअप का है, टॉप ऑफ द बार है ना, एक सेकंड में टॉप ऑफ द बार आ जाता हूँ, यहाँ पर लगा दी। सर आप ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देखिए बहुत ज्यादा आगे आ गया, बेशक आ जाए, नहीं लेकिन नहीं आया ना, तो मैं पहला रिवर्सल के वेट कर रहा हूँ ना, नहीं आया ना अभी। रेड, हाँ मैं टॉप ऑफ द बार लगाता आ रहा हूँ, वो वहां पर गई नहीं, टॉप ऑफ द बार में जाएगी तो मुझे ऑर्डर पिक करेगा ना। लेकिन सर रिस्की नहीं वाली करता, नवा चला गया, ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ये देखें RSI देख रहा हूँ, RSI ओवरसोल्ड नहीं हुई ज्यादा। अगर तो ये बिल्कुल पिंच हो जाए ना,
बिल्कुल पिंच हो जाए तो फिर मैं ये ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, मे बी मिड बैंड लगा लूंगा। हाँ नीचे RSI। तो ये टॉप ऑफ द बार ऑर्डर है जी, बिल्कुल क्लीन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। इसमें आप मिड बैंड 1510 भूल हो ये रहा है। जब से ट्रम्प आया ना 1510, 18 फरवरी से 1510 पे हाथ ही नहीं पड़ रहा। वो आप डालते हैं वो इतनी थे, तो 30-20 सुकून से चल रहा है ना। तो मैं बताऊं, मैं डैनियल से बात की, अगले चार्ट के वर्जन हम 60-40 पे डाल रहे हैं। हाँ इसका डबल, क्योंकि फिर आप 30-20 देखेंगे और 60-40 भी देखेंगे, क्योंकि आपसे पहले 10 नहीं वही रहेगा, लेकिन पहले होता था 403-804। ये जब मार्केट पूरे दिन में 10 पॉइंट मूव होती थी, फिर आया 805-1510, अब 50 पिछले 4 साल से तो 1510 30-20 चल रहा है। तो जिस तरह से वॉलेटिलिटी चेंज हो जाएगी तो हम 30-20 और 60-40 पे चले। अब देखें ये 30-20 इज सो स्मूथ, इट्स नॉट गिविंग यू anything, your stop loss is there, you're thinking now it moved down 1 bar, I will move down 1 bar. Give me a second, remove this. I can clean up this chart a little bit more. I don't even care about watching BBs. Remove. All I care about is watching my. तो ये है सर एक नॉर्मल 30-20 की स्कैल्पिंग, top of the bar, but your probability is much higher. अब देखें यहां पर भी टॉप ऑफ द बार चला, यहां आपको पता है मैंने रिजेक्शन विक देखी, अब नीचे बार आ गया ना, सो आई विल मूव दिस माय ऑर्डर टॉप ऑफ द बार। और सर एक क्वेश्चन और, आपके सामने बड़े फायदा उठाया। हाँ नो प्रॉब्लम, इसी काम के लिए एसआरई बनता है। हाँ ये आपके सामने बना है जी, जैसे एसआरई बन गया, जैसे लेट्स से यही हो गया, या स्विंग रिट्रेस, यस सर यस 100% बना है। अब ये एलएच के बाद यानी लोअर हाई के बाद तो आपको डैनियल हमने सेल करना है, देखें हमने सेल करना है। मैं आपका सॉरी ऑर्डर उठाता हूँ, ये देखें आपकी दफा मेरा, नो प्रॉब्लम। डैनियल ने आपको ये बताया हुआ है स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन दिस बिकम्स स्विंग, दिस बिकम्स रिट्रेस, दिस इज एक्सटेंशन। तो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, तो कुछ लोग यहां से सेल स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये एक वे है कि ब्लैक कैंडल बनी, वो आपको 7 लेती गई, 13 पॉइंट तक लेके गई है, 13 पॉइंट, और इसमें से 8.5 5 करें तो 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने सेल स्टॉप किया, आपसे ये मिस हो गई, आप कहते हैं यार ये क्या पता ये चलते ही वापस आ जाए। मेरा स्टॉप लॉस 34 टिक्स का है, आई हैव 34 टिक्स, आई डोंट वांट टू टेक दिस ट्रेड, ओके नो प्रॉब्लम, बट पुट योर ऑर्डर देन राइट हियर ऑन टॉप ऑफ द बार, और हियर और हियर और हियर और हियर और हियर, सेल नो बाय। सो बैकग्राउंड मैजेंटा सेल लिमिट। लेकिन सर जैसे ये ट्रेंड यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, आप लोग हमेशा कैंडल के कलर को देख के कहते हैं ट्रेंड चेंज हुआ, मेरा तो ट्रेंड बैकग्राउंड मेरा ट्रेंड है यार, कैंडल तो नहीं है मेरा ट्रेंड। जो हमने ऑर्डर लगाना है वो बैकग्राउंड कलर के हिसाब से लगाना है, भले से कुछ भी हो। मेरा ख्याल है चारों लेक्चर में डैनियल ने यही कहा है, ट्रेंड। एक हाँ सर मैं 1.5 नंबर मैं उस वीडियो पे भी चला जाता हूँ, वेट कर, मेरे पास हर लेक्चर मैंने 8-8 100 दफा सुने हुए हैं। नहीं मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। अब आ जाए ब्रेन ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो हमें हमारा 90 to 95% ट्रेड देती है। अब देखें, आप कहेंगे कि यार इसने उस पॉइंट से निकाला जहाँ, क्योंकि मैंने 800 दफा ये वीडियो देख के मुझे पता है कि गैप ट्रेड देखी है, जो माँ है हमारी सॉफ्टवेयर की, और वो क्या है। अब यहाँ पे मैं ये ट्रेडर्स को रिमूव कर दूंगा और मैं डालने जा रहा हूँ इस पे, इसको हम ओवरऑल कहते हैं बीबी, क्या कहते हैं ये बीबीज वाला आ गया। अब यहाँ पे देखें डाइवर्जन क्या है, डाइवर्जन ये जिनके पास पेट कर रहा है,
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस डॉट ने, ये डॉट अपनी इस बार से बाहर नहीं निकला, सर ये गैप ट्रेड था बाय द वे, यहाँ पर गैप ट्रेड एक्सप्लेन हो रहा है। ये ब्लू लाइन एंड हमने से नीचे चले गए, तो मुझे पता है कि नियर फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, ट्रेंड चेंज कर चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस जगह ओ की 50-50 की दौड़ ले लें, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर अगर ग्रीन है तो ब्लैक कैंडल इज रिवर्स, और ब्लैक कैंडल का मतलब क्या हुआ कि ये 100% होना चाहिए लार्ज फिगर मैजेंटा में। उसके साथ क्या है कि सिस्टम आपको एक ब्लैक एरो दे देता है। सो द आइडिया इज सर बैकग्राउंड रेड है, आपने बाइंग में नहीं जाना, तो अब यहाँ पर मेरा ऑर्डर कहाँ लगेगा, यहाँ पर, ये देखें जाके मैंने ऑर्डर लगा दिया। टॉप ऑफ द बार, लोएस्ट स्टॉप लॉस इन एनी ट्रेड। यू नो व्हाई वी इंट्रोड्यूस मिड बैंड, अलते उसकी साइकोलॉजी ये है, लोगों के पास वेट नहीं होता, तो कहते हैं यार बैठे हैं ऑर्डर नहीं आ रहा, और तो हमने कहा ठीक है यार आप क्या करो, फौरन ऑर्डर लेना है ना, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, यही ट्रेड 1510 में, ये देखें, ये 1510 में मैं सेल लॉस कर, ये टॉप ऑफ द बार 1510 का है, बने सेल नहीं किया ना, कभी बाय तो नहीं किया ना, 1-2 टिक्स आ गए ना, तो एक पॉइंट देख यार, उधर भी कर रहा हूं तो सेम कर रहा हूं, पैसे अभी तो स्लो नहीं वो तो सही है, लेकिन आपको नहीं देखें, एक पॉइंट मिल गया मुझे, टॉप ऑफ द बार इस ट्रेड में भी, ये देखें यहाँ पर टॉप ऑफ द बार आई, यहाँ पर ये यार, ट्रस्ट में मैं कभी बैकग्राउंड कलर के खिलाफ नहीं जाता, मेरा ये रूल, बैकग्राउंड मैजेंटा है, मैं कभी सेल बाय में नहीं जाऊंगा एक्सेप्ट एरिया, भाईजान एरिया में हमेशा रिवर्स होता है। हाँ मैंने कहा ये देखें 3 पॉइंट ले लिए टॉप ऑफ द बार यहां से, और अगर रिजेक्शन विक डालते यहां सेल डालते 4 टिक्स, हर ट्रेड के अंदर, हर बार के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट पड़े हैं, इट्स ओके, आई विल क्लोज दिस। अब मैं कहते हैं यार मैंने फिर सेल करना है, नो प्रॉब्लम, आई विल गो एंड सेल हियर। यहाँ स्टॉप लॉस उससे भी छोटा है, मैं आपको बताऊं ये सुबह 9 बजे नहीं हो सकता, इतनी तेज मार्केट आजकल चल रही है, ये आप टॉप ऑफ द बार कैसे लगाएंगे सुबह 9 बजे, तो 30-20 में आ जाए ना, एसआरई का वेट करते रहे, आप कहें मेरा सेटअप बन गया है, अब मैं टॉप ऑफ द बार लेता जाता हूँ। नहीं वो देखिए मैं ये सबसे तेज है, अगर आप 14 पोजीशंस देखें ना, 14 पोजीशंस, सॉरी आई हैव टू स्टार्ट इन इंग्लिश, somebody is angry, so here's the thing, this trade is called top of the bar, bottom of the bar, order filled, let's see, is it going to give me any point, I don't know, so 0, 1 second, 1 tick, let's see, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, मैंने देख लिया जी, 37 देखे थे, 3 ticks, तो यार अभी भी मैंने सेल ही डाला है, buy नहीं, so like I did not do any, so here my stop loss will get hit, it's a huge divergence, but that's not yet, so my stop loss would be 4.75, इसका क्या होता है, exact method है, और उधर 3.5 है, तो इधर 3 है, so let me double check, go 1 second, where is the black candle? Okay, so if this was my entry, 56, 59 minus 5661 minus 5661 minus 5659.25, यहां पर आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1.75 है, ठीक है सर बाद दफा जो है ना क्या होता है कि मिड बैंड, सॉरी मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि बाद दफा इतना ऊपर चली जाती है, पीछे का कलर जो है ना चेंज हो, तो फिर हम निकल रहे हैं ना, देखिए 1 सेकंड, हमने अभी ट्रेड नहीं डाली है, अभी हम वेट कर रहे हैं वापस नीचे आने का एसआरई की वजह से, अभी हम वेट लोअर हाई बना हुआ ऊपर, हम वेट कर रहे हैं कि नीचे आएगा, तो हमने 4.5 के हिसाब से नीचे ट्रेड लगा दी, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड कलर पता चला वो ग्रीन हो गया, background color and SAAS don't have any something in common, वो कहीं पर भी चेंज हो जाए,
रेड में भी ग्रीन हो सकता है, ग्रीन में रेड हो सकता है. So an SRE setup, look at this. Your SRE setup in this case is higher high, higher low, but the background has changed. But SRE started happening here. तो जो SRE देख रहे हैं वो बैकग्राउंड कलर नहीं देख रहे हैं ना. यही बस मेरा तो SRE तो बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है. SRE के बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है. SRE का सिर्फ ताल्लुक है आपके ट्रेंड चेंज होने से. This means you are saying it doesn't matter either जो green one or No, it doesn't magenta matter. one आपका जो 15 है उस हिसाब से वहाँ exactly. So SRE setup does not care about background color. But with the background color, I will stay in my trend. If the background color is that, I'm selling. If the background color is green, I'm buying. So, okay. Now, I want to sell. I will always do a sell. Order submitted. Never a buy. लेकिन अगर इसी में Order कलर failed. चेंज होता फौरन निकल तो निकल वो मेरा स्टॉप लॉस बताएगा. Target failed. एक पॉइंट लेके बाहर आ गया. मिड बैंड से एक पॉइंट तो बन जाता है यार. टेबल पे मत बैठ, वो फिर होगा सारा गिर जाएगा. लास्ट मैं आपकी सेफ्टी के लिए. अच्छा सो अगर वो चलता जा रहा है तो नीचे जा रहा है. So अगर आपको 1510, so if you feel 1510 mid bands are a little too much to do, go on 3020 and enter your trade from top of the bar, bottom of the bar, but with the background color, please. with the background. ये तो फिर टाइम बड़ा सही है. तो ठीक है. नहीं लेकिन वो चलता है. Bottom और top. okay, see, okay, I'm back to 1510. Mid band has worked. I missed it. So I will sell here. I will sell right here. Sell limit. This is my mid band. By the way, this is my mid band for 3020 stop loss is 3.5. 1510 is 1.75. 1510 top of the bar. Your stop loss is 1.75. Because why? Okay, in this case, this is a 1510 top of the bar trade. I missed the mid band. Where do I want to do? I want to go top of the bar. So let's go sell. एक चार्ट टेक प्रॉफिट 1.75. देखें वो नीचे लोअर लो अभी बना. Let me do a breakout trade because I want to see OCO करके. So let me do none. I will do a breakout. Sell stop right here. There you go. If it keeps going down, take me with you. Yeah? Yes. So this I was hoping that it will continue to do a breakout and go back. But imagine if you took a mid band here. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. If you took a mid band here, you still were in the trade because it only went up to 8 points. And okay, take care. During my MBT session, I tried to put as wherever I'm comfortable, like really two type of trades, area or top of the bar. That's all really the trades I'm taking. And I took today 2 top of the bar trades and got a point in each. अब देखें यहाँ top of the bar आ गया ना, sell ask कर दिया. क्योंकि मैंने मार्केट दबाना था लेकिन नहीं दबाया. अब यहाँ से भी आपको top of the bar से एक 3750 नजर आ गया था. एक सेकंड. ये top of the bar trade है ना यार, नहीं फेल होता यार. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नहीं फेल हो रहा. अब आपने विक के ऊपर से लिए? नहीं बिल्कुल टॉप ऊपर से. मतलब विक के ऊपर से लिए? नहीं, विक तो बाद में बनती है ना. विक तो लेकिन मैंने टॉप ऑफ द बार से ट्रेड लिया है. मैंने तो सेल दबा दिया था ना क्योंकि लिमिट ऑर्डर नहीं था ना, तो मैंने आपने ऑर्डर पहले प्लेस किया. यस. उससे उधर टच किया, थोड़े ऊपर गए, वो बिग बन गए. $1.50 फिर वो नीचे आई, उसने 0 किया, फिर +0. चले यहाँ मैंने 50 निकाल लिए थे. मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ, हाँ
यहाँ पर मैं सेल स्टॉप लगा रहा हूँ, ये देखिए मैंने टॉप ऑफ द, हाँ अगर एक पॉइंट नीचे है, सेल स्टॉप लगाया है, क्योंकि अगर ये रिजेक्शन वेक स्ट्रांग हुई तो मुझे ये साथ ले जाएगी और आई वांट टू गो विद इट। सर मैंने ये गैप ट्रेड का बहुत सुना हुआ है। नहीं ये गैप ट्रेड है। हाँ ये कह रहा हूँ कि तो इसका ये बहुत सुना है कि ये ज्यादा। So okay, gap trade हो जाती है। the difference is gap trade is truly price versus BPs, but this exact trade is called retracement divergence, which is kind of a gap trade as well. But अब यहाँ मैंने मिड बैंड था लेना है जी, सेल ही करूंगा, बाय तो नहीं कभी करूंगा, क्योंकि अगर मैंने मिड बैंड से लिया होता बाय द वे 2 पॉइंट मिल गए थे। If you feel mid bands are too difficult for you, go to 30-20, go wait for SRES setup and then start selling top. If you don't want to wait for SRES, हर green में buy करी जाए, हर red में sell करी जाए, top और bottom से। एक पॉइंट ले लिया यार आपके सामने, कोई ऐसा मसला नहीं है। 15-10 में मिड बैंड ले, तो वो क्या करता है कि उसके करीब आता है, एक टिक छोड़ के फिर वापस 2-3 जगह जब ब्रेथ ले रहा होता मैं निकल जाता मैं अपनी। ठीक है, इट्स फाइन। आज लेट आता, बहुत लेट आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स से 9:30 से 11 के बीच में कितने मिनट का आते हैं? 9 से 11 के बीच में 30-20 के। अपना कंप्यूटर खोलो। नहीं वो तो काम से बात खोलो या तो कम आना चलेगा। ये क्या दो आते मैंने एक मिनट दो अब दो एग्जैक्टली दो 3 आते हो, दो मल्टीप्लाई कर लो लेकिन आप एज कंपैरिजन 15-20 के देखें तो ट्रिपल आते होंगे। ये बात कर रहा हूँ, 15-10 आप मेरी बात समझ लो। 2 times 30-20 Order failed. rather than talking, do this. Order submitted. This is a divergence, by the way. It will go up. I think. Order failed. 9:30 से 11 के बीच में कितने मिनट? It will go up. देखें प्राइस नीचे आई, स्ट्रेंथ नहीं नीचे आई, तो ये जैसे यहाँ ब्लैक कैंडल बनेगी तो ये इसने ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ से बाय स्टॉप कर रहा हूँ। Order submitted. 3 तो आपके सामने हो गए। मिड बैंड अभी 2 पीछे मिड बैंड गुजरे हैं, वो देखें, वो मिड बैंड टच करे ट्रेंड चेंज होने के बाद, मिड बैंड से 5 पॉइंट के बाद हो जाता है। मार्केट्स में ये प्रॉब्लम सारे ग्रैब नहीं कर पाते। मार्केट तो ऑलवेज कैसे ये प्लस मनी। Order canceled. सिर्फ एंट्रियां ठीक कर ले, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, बॉटम ऑफ द बार, टॉप ऑफ द बार, मिड बैंड, गैप ट्रेड भी उन्होंने जिस तरह कहा, सो नहीं एग्जिट के लिए एटीएम रखेंगे जी, 4 टिक्स लेने हैं, बाहर आ रहा हूँ। एग्जिट में मैं पैनिक करती हूँ और एंट्री में हाँ तो आपने पे कर दिया? हाँ ठीक है, हो गया, तो उनसे चैट कर लेना। सुपर एरिया से चैट किया उन्होंने आपने? हाँ तो उन्होंने लिंक करवाया था। नहीं लेकिन पेमेंट के बाद उन्होंने आपको सेटअप करवा दिया है? तो उनसे सिर्फ ये लिखे ना, मैंने ये भी तो थैंक यू राजा सर। ठीक है जी, नहीं अब उनका जवाब आता है तो मैं यहाँ से 20 डेज बाय Order failed. लेकिन इसके 10 टिक तक मेरे 20 डेज रिस्क पे तो बहुत लगी, मैं खुद ही इधर many years on here.
बाद ये देखो कि हायर हाई आ गया, हायर हाई आ गया, मिड बैंड चलो चलो भी बात करते हैं राघव भाई। हाँ जी, ये देखिए डाइवर्जेंस के ट्रेड में पैसे बनते हैं, आपको पता हो कहां से एंटर करना है। डाइवर्जेंस कंफर्म होती है, आप लोग बाय गेट कहां से ट्रेंड चेंज होना है तो ग्रीन है। तो अगेन अब मैंने ये देखें, चले यहाँ पर मैंने अब बाइंग शुरू कर देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर आके ये बॉटम ऑफ द बार से बाय लिमिट लगा दी, डन, मेरा ऑर्डर लग गया और 2 पॉइंट लेंगे, बाहर आ जाए। ये मेरा बॉटम ऑफ द बार ट्रेड है। सर 30-20 जरा स्लो चलता है तो आपको थोड़ा चांस हो जाता है ऑर्डर लगाने का। सर आप साथ ये भी बताएं कि एसआरई देख के आपने ऑर्डर लिया? नहीं, इसमें एसआरई नहीं था, एसआरई आया ही नहीं। सॉरी, बैकग्राउंड कलर आरएसआई आरएसआई देख के, अभी तो आरएसआई में बहुत जान है मैं यही कह रहा हूं ना, आपने उसको देख के लगाया। सर। पता क्या होता है, मैं उस एसआरई नहीं देखता, मेरे पास एक और ट्रिक है, मैं ये नंबर देखता हूँ 13 पॉइंट हुई है, 25, 30, 31 के बाद ना ये ओवरबॉट हो जाती है। ये जो नंबर है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स मूव हो रहा है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस नंबर शोज? दिस नंबर शोज फ्रॉम दिस पॉइंट 56, 55 to this point where how far I've gone up. So when you will start to see 29, 30, 31, 36, it's overbought. So I will move my trade at the bottom of the bar. There you go, right here. तो वेट करें, अभी टाइम लगेगा। हाँ थोड़ा सा अभी आप, मैं अभी देखता हूँ, एक सेकंड। हाँ आप नईम खान साहब हैं, 5 मिनट दें, मैं आपको देखते हैं क्या होता है। नीचे गिर गई? नहीं नहीं, मैंने क्या कम लगाया था? नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं अभी तो हुआ ही नहीं, एक सेकंड। हाँ अब बने, पर इट्स ओके, बाय आस्क। बहुत नहीं मेरा स्टॉप लॉस गलत है। चलो देखने के लिए कि क्या होता है मिड बैंड से। लेजेंड से बात करें, ये खत्म करें। नहीं होगा आपकी बात मानते हैं। अब मेरी का मुझे बताए बगैर उन्होंने इसको किया है। वो कहेगी पुट योर ओन मनी, क्योंकि
Sorry, man. Hooters have changed to family focus. Hooters. No, none of you have done that. Hooters family focus. तो Hooters के अंदर Let's see. अच्छा AS करो MES करो. एक सेकंड में. Yes sir. Let's see. ये इसमें तो बिल्कुल ही तो सेंटर में आ जाती है कहानी. 5 MES कर लें. अच्छा ऑर्डर ज्यादा कर दें. देखें ब्लैक कैंडल नीचे की तरफ आ रही है और मेरा सेटअप पूरा होने वाला है. 8:30 पे आएगी ना, ब्लैक कैंडल कंफर्म होगी. So this is the second SRE setup just coming back to back, and the last one gave us good like 5, 6, 7 points. So right here is SRES setup. So this I will definitely get it. Not yet. I don't want to cancel because it could still be a gap trade and go back up. एक आपका तो बाय लगा हुआ है. हाँ. In a slow market, you do this mid-band stuff on a 15-10. But in a जो आजकल सुबह 9:30 होता है 30-20 ठीक है. कल भी सुना कि स्पीच करने. कल तो असल tomorrow will be rough. देख क्या बड़ा संभल के काम करना. भाई कभी भी ES में मत करना. जब ऐसी चीजें हो रही होती हैं 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट. क्योंकि 5 लॉट MES करके जो लॉट बढ़ा दे. 2 लॉट बढ़ा दो. मेरे को सिर्फ 8 महीने लगे 1 लॉट से 2 लॉट आया. ये बोलते बोलते लग गए बिल्कुल भाई 2 लॉट पे आया. मैं एक लॉट पे 300 बनाता था. एक लॉट. हाँ बैठे हैं SRES के ट्रेड में. नहीं मैंने अभी पिक नहीं 2 बजे दो सर तो सिर्फ हार्डवेयर पे खिलाता हूं. नहीं अभी 1.25 नहीं सर. किसी का माउस मेरे NBT भी मुझे आप भेज दो फोटो कि आपने कोई और अकाउंट लगाया. हो गया सर. ये चल पड़ी गाड़ी $25. अब टेक्निकली जो ट्रू ऑर्डर बनता है ना वो ये बनता है, यहां से सेल शुरू करें. SRE कंफर्म हो गया है तो ठीक है. अभी जा रहा है. मुझे देखे 1 पॉइंट दिखा दिया था उसने, पूरा 1 पॉइंट दे दिया है SRE के सेटअप में. अभी गाड़ी चलनी शुरू हो गई है. अब टेक्निकल एक पॉइंट तो मैं ले लूँ ना. 37 तो हो गए थे, 50 दिखाए थे उसने. 62-50 ये हो गया. ये ट्रेड बंद हो गया और यहाँ से मेरा सेल लिमिट शुरू हो गया. ये देखें SRES कितना 3 पॉइंट दे गई. सो अनबिलीवेबल ट्रू. ये देखें ये मेरा अब सेलिंग शुरू हो गई टॉप ऑफ द बार. SRES कंफर्म हो गई, टॉप ऑफ द बार शुरू कर दें. या SRES ले जैसे ही SRES आए आपको पता है या मैं ब्रेकआउट लूंगा या मैं कैंडल लूंगा. अगर कैंडल ले ली तो के बाद नहीं. मिड बैंड तो फिर इधर ही आते हैं ना. ये मिड बैंड ही बन रहा है तकरीबन. यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर लगाया है वो 15-10 का मिड बैंड बन रहा है. अब मैं कहता हूँ यार नहीं मुझे चलती गाड़ी में बैठना है तो फिर सेल स्टॉप लगाएं यार. अगर आपने चलती ही गाड़ी में जाना है तो अगले बार से बैठें. चलती गाड़ी में इस सिचुएशन में सेफ है. नहीं सेफ तो सिर्फ रिजेक्शन वीक के बाद है. अगर रिजेक्शन वीक ऊपर होना फिर निकल. लेकिन अगर आपने बैठना ही है चलती गाड़ी में तो अगले बार का वेट कर लेना यार. बट द सेफेस्ट ट्रेड इज टॉप ऑफ द बार आफ्टर गेटिंग द SRES confirmation. Higher high, higher low, and in this case we did a sell stop, got our couple of points and got out. So 2 back-to-back SRES setup came on 30-20. ये कई दफा आपको होता है ना यार, क्योंकि ये पता क्या ट्रेड कहलाता है ब्रेकआउट. अगर आप इसको देखें मैंने कहाँ लगाया हुआ है, वो पिछले से नीचे है ना, पिछले लोअर लो के बाद ही आएगा ना. अगर उसको तोड़ेगा तो एक टिक नीचे लगा. एक टिक नीचे ब्रेकआउट्स है ना, क्योंकि ब्रेकआउट ही कहलाता है वो, क्योंकि वो पिछले को ब्रेक करेगा तो फिर निकलता जाएगा.
अब यहाँ देखें जी कहाँ तक आता है इसको, ये टॉप ऑफ द बार आ रहा है थोड़ा सा, oh sorry, we'll put this in the top of the bar right here, sell limit. आपके लिए क्या अकाउंट दिया चलो ठीक है कर Take care जी, have it. नहीं घर पे आएंगे घर पे कोई होना चाहिए ओके सर Take care जी, थैंक यू वेरी मच ईद मुबारक है। ईद मुबारक ईद मुबारक सर थैंक यू ईद मुबारक भैया बड़ी जल्दी पिक किया तुमने वैसे नहीं बहुत लेट हो गई नहीं बहुत जल्दी दूसरे तो बहुत ज्यादा लेट बहुत सर ओके थैंक यू सी यू बाय में रिजेक्शन लिख के बाद हाँ जी, अगले बार पे किस साइड पर देखे वो चलती गाड़ी पे बैठ गया मैं, चलती गाड़ी पे मैंने अगला वो लिया ना आपका सेल स्टॉप, तो वो बॉटम से अगली बार से ले लिया भाई, तो वो देखें एंट्री समझ आ जाए, बाकी तो आसान है यार काम। यार आज तो दिन की अपडेट्स और हजार कमा सकते हैं और कीड़ा और होता है ना माइक्रो में ट्रेड और सबसे बड़ा मसला जो कीड़ा और ट्रेड में जाए वो ठीक हो जाए। मैं हर ट्रेड के पीछे डैनियल का लेक्चर निकाल सकता हूँ कौन सा कहाँ पर है, देयर इज नो और जी इट्स ओके हर चीज बड़ा मैं रिटायर हो सकता हूँ एक्सपेक्टेड हाई आई तो सेल कर दें कितने तो कल आएंगे ना आपका हो गया, कर दिया उन्होंने, हाँ हाँ चेक करें उनसे कहें निंजा रीस्टार्ट करें। Alright, see you guys. तो फिर वो आपके साथ बैठने के क्या सर आप मुझे शाम को व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका एनी डेस्क करके आपका वो सेट कर दूंगा। शाम में किस टाइम का फ्री बस 7-8 मैं आप नहीं एक्चुअली मुझे घर पहुंच लेने थे अराउंड 6 o'clock आज। का जो मिड बैंड है अगर आपके अगेंस्ट भी गई ना मार्केट जाना है मैं 10 का दूंगा में सीधी सर्दम की वजह से या फिर अच्छा उससे देखिए 700 पे जाएगी सर, कल गिरनी है, कल गिरेगा ये, हाँ लेकिन कल गिरनी है ये क्या हो रहा है लुक एट इट फॉल, शुरू हो गया इट्स अ फ्री फॉल MNQ पा दियो कित्थों में निकल आएंगे यार फ्री फॉल
Oh man. It's okay. All right, one more day. बस जैसी डायरेक्शन की तरफ है ना ऑर्डर ड्राइव करके नीचे ले। अगर रिजेक्शन टाइप बना रही है ना ऊपर तो उसकी तरफ जाना तो नीचे शूट करेगा और ही ऑर्डर डाल दो एक इधर और ऑर्डर डाल दो इस ब्रेकअप सेल का इससे टेक्निक इससे एक टेक्निक we do have some stuff. पाँच मिनट दो सर।